Mr. Vijay Singh, the whole squad of team riders, we are in all readiness. Requesting Ravi Narayan Sahu, Vijay Singh and team riders to please come along for the toss. A very good evening and a warm welcome to match number 38. That is the match number 37, the first of the playoffs, that is qualifier number 1. It's going to be team riders to my left, and to my right it is team warriors. A very important match coming up. The business end. We have Mr. Rajesh Dhanuka to flip the coin. It's going to be Vijay Singh to take the call, Rajesh Bhai to flip the coin. Toss time. Lakshmi is the call. And it is Cello. It's ended up Cello. राजेश भाई, प्लेऑफ्स की शुरुआत है. पहले 2 पोजीशंस में आने का ये फायदा है कि जो भी टीम हारेगी उसको और एक मैच खेलने को मिलता है. लेकिन आज ही इसी मैच को जीत के आप सुनिश्चित करना चाहोगे आपके स्थान को ग्रैंड फिनाले में. किस तरह का मूड है आपके कैंप में और आपका निर्णय क्या है? मूड तो बहुत अच्छा है, सब लोग एकदम फिट है और सुनील देवली सर भी खेलेंगे अब इस टाइम. तो वी विल फील्ड फर्स्ट. शाम को ड्यू आता है, मेन रीजन तो ड्यू का ही है और चेजिंग थोड़ा इजी हो जाता है. और उन लोग राइडर्स आर वन ऑफ द बेस्ट टीम नाउ, द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट राइट नाउ. सो इट विल बी अ गुड गेम. लेट्स सी. Yes, Vijay bhai, very important game. You all have been one of the best teams. In fact, the best team so far. You all are at the number 1 position. But this is a fresh match, a new start, and you have to win this one to make it to the grand finale. You do not want to be depending on that other match, isn't it? Yeah, obviously, both the teams need to win this game and secure its place in the final. That's it. How's your team looking like? Any injury concerns or full strength? No. Everyone is fine. And now Sunil Raheja is back. Ravi Sahu is back. So we have one bowler and one more batsman. Now that you're batting first to Vijay, what's the score you're looking at? 200. क्या बात है? Yes, the news from the center. Rajesh Patni has won the toss and is going to be fielding first. Over to Kaushik bhai. थैंक यू एवरीवन. तो ये मैच एकदम धुआंधार होने वाली है बिकॉज बल्ला 200 रन के नीचे मानेगा नहीं और राजेश भाई 125 से ज्यादा बनाने नहीं देंगे. तो आई एक्सपेक्ट के बहुत ही धुआंधार इनिंग होगी. थैंक यू सो मच एंड आई होप दैट एवरीबॉडी विल प्ले विद द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड थैंक यू सो मच. One with the thumbs up. गणपति बाप्पा. राष्ट्रगान के लिए बिल्कुल स्तब्ध खड़े होंगे. कैप्स और हैट्स निकालेंगे.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे, जय श्री राम। Hello. Hello, check. A very good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the business end of the Salo 45 plus T20 League. This is match number 37, qualifier number 1. The playoffs commence tonight. It's going to be Team Riders and Team Warriors. Team Riders at the number 1 position after the league format, and Team Warriors is at the number 2 position. The toss has been won by Team Warriors and they're going to be fielding first. So it's going to be the opening duo of Team Riders to take first guard on this wonderful batting wicket. This is really serious stuff now. One small mistake and you could be in a big spot of bother. Right from ball number 1, you got to be right on the money. The team that wins the match tonight makes it to the grand finale. The team that loses the match has one more shot at making it to the grand finale in the form of qualifier number 2. But the main thing is to win the match tonight itself, get that insurance and make it to the grand finale. देखना है कि आज की शाम किस टीम के मत्थे जीत का परचम लहराता है.
प्लेऑफ्स शुरू हो चुके हैं। इस मैच के टॉस को जीता है टीम वॉरियर्स ने और गेंदबाजी का चयन किया है। यूट्यूब पर बने हुए सभी दर्शकों का गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। आपका यही साथ और स्नेह हमेशा हमारे साथ बना रहे, ऐसी गुजारिश करता हूं, ऐसी प्रार्थना करता हूं। दोनों टीम्स को ढेरों शुभकामनाएं। टीम राइडर्स के कैंप में जयेश जोगिया, हिरेन मेहता, विशाल तोड़ी, सुनील रहेजा ये ओनर्स है। टीम वॉरियर्स के ओनर्स है नितिन सिंगल, ललित विज और राजेश पटनी। Team Warriors led by the co-owner Rajesh Patni and Team Riders led by the very experienced and the flamboyant Vijay Singh. The three umpires for tonight's game, Raju Pawar sir, Ajit Putran sir and Kiran Purandare sir. And it's going to be the team of Promo Productions as always to get those live pictures to you, the live streaming. This whole tournament has been put on its feet by the cricket committee chairman and the governing council member, Mr. Kaushik Mehta, and his team of the key organizers. They've done a fantastic job. A big thank you to our title sponsor, Cello. It's indeed an honor and privilege for the GSC to be associated with this kind of a powerhouse of a brand that is Cello. Thank you to our associate sponsor, the Lakshmi Leela Group, a venture by Praveen Kothari. A big thank you to all our other sponsors. That is the Jensen LED Lights. We've got Gandhar Oil Refinery, Chetak Ply. We've got Shakti Plastic Industries, KCD, Adi Builders and Developers. So that's the way the lineup of sponsors goes. I'm sure that Goregaon Sports Club has delivered more than 100% on all the deliverables promised to the sponsors. Yes, in the next 7-8 minutes, we will be getting this first playoff match, that is the qualifier number 1 on its feet. Thank you. This is your host and host, Nishad Kora, on behalf of the Goregaon Sports Club. Thank you.
हेलो, जो भी साइड स्क्रीन के वहां पर बैठे हैं सामने की तरफ, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप चेयर्स शिफ्ट करें ताकि बॉल ठीक तरह से साइट हो। और वहां पर जब आप बैठते हो तो थोड़ा सा यू गॉट टू बी केयरफुल एज वेल। Warm greetings to our governing council member Satish Agarwal sir. Madhusudan Iyer is also having a go. Quite a few senior cricketers are here. Shrivals Kumar, Dipen Patel. We've got Kuldeep sir, Inderjit Bhai. And yes, as far as the key organizers are concerned, Pramod Bhai Kashyap, Vinay Bhai Surana, Captain Abhay Vaidya. Warm welcome to our governing council member and the Health Club chairman, Vivek Bhai Narsaria. All set for this first playoff match to get underway. Suswagatam, Suswagatam, Suswagatam. Namaskar, Namaste, Adab, Sat Sri Akal, Vanakkam. A very good evening and a warm welcome. Match number 37 getting underway. The flip of the coin in favor of team Warriors, and they have opted to bowl first. It's going to be the opening duo for team Riders to take first guard. And just like yesterday, it is Sanju Gangir and Yogesh Kotak to assume that role of the opening pair. Both the teams are playing full throttle. They are full strength, no injury concerns. So that is the good news. It's going to be Manu Gautam to open the proceedings from the in-orbit end. It's going to be Sanju on strike. What a match this promises to be. This is the business end. Really serious cricket getting underway. You have to be at the top of your game now. No excuses. One small mistake and you could be shown the exit door. To be very strong in the mind, be at your very best. You got to go out there and enjoy the game. If you want to be performing at your very best, you got to go out and enjoy the game. Raju Pawar, the main umpire, the square leg umpire at the moment, Ajit Putran, and in the third umpire seat, it is Kiran Purandare. To my right, the two scorers, Yatish Duri and Roshan. To my left, as always, Akash Singh on the console and promo productions team. Cameraman Dhananjay and Sonu. It's a 7-8 camera setup. The final indicator coming through. Lights, camera, action, showtime.
पिक्चर परफेक्ट डिलीवरी के साथ अपने स्पेल का आगाज करते हुए मनु गौतम बहुत ही धीमी रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद बिल्कुल सटीक और नपीतुली। थोड़ा सा पिछली खेला है लेकिन वहां पर कोई भी फील्डर न होने की वजह से किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं। दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े हैं। द फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड, संजू गंगीर अप एंड अवे विद दैट कपल। Oh, nicely flicked away. What a terrific connection there. That was drifting down the leg side, but to the credit of Manu Gautam and his captain, they've got protection in the deep to exactly stop that kind of a shot. शतरंज का खेल सजा हुआ है, देखना है कि कौन सा मोहरा किस तरह से आगे बढ़ता है. It's all in the mind, isn't it? You got to bring to the fore those calculated moves. You got to come in with a game plan. Oh, what a positive intent from Yogesh Kotak. That was the half volley, and there was room on offer. The first Chetak ply boundary of the evening. Straight away, the very first delivery that he faces, that's been dispatched away into the backward of point area for a very, very smart Chetak ply boundary. Maharajao ki pasand. With that boundary, the score on to 7. Oh, what a positive intent from Yogesh Kotak. That was the... वेल बोल्ट और पूरा सम्मान देते हुए बिल्कुल रक्षात्मक मुद्रा में उस गेंद को खेला. इस बीच आइकॉनिक प्लेयर अनिल दुग्गड़ का भी तहे दिल से स्वागत है. इस वक्त किसी भी तरह से कोई भविष्यवाणी करना या किसी भी तरह से कोई एक्स्ट्रा रिमार्क्स करना ये ठीक नहीं होगा, लेकिन जो भी कुछ ये दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से पहले ओवर में देखने को मिला है, वाकई में काफी सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज और रवैया इख्तियार किए हुए ये दोनों ही बल्लेबाज. इस मैच के टॉस को जीता टीम वॉरियर्स ने, यानी कि राजेश पटनी ने, और बिना कोई हिचकिचाहट गेंदबाजी का चयन किया है. थोड़ा सा ड्यू फैक्टर का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि इसी वजह से मैं इस मैच के टॉस को जीतकर गेंदबाजी करना चाहूंगा. दो सबसे सर्वोत्तम टीम्स इस सेलो 45+ T20 लीग की सबसे बेहतरीन टीम्स, सबसे दर्जेदार टीम्स आमने सामने क्वालिफायर नंबर 1 प्रगति पथ पर. Warm greetings to Avinash Mahinkar as well. It's going to be Ajay Joshi as always to operate from the far end, left arm over the wicket. Drifting down the leg side, that is the natural shape that he gets. Left arm over the wicket, the ball drifting into the pads. So that is the kind of shape that he always gets. He'll have to alter that line just a wee bit. Once again, that same kind of a delivery, the same end result. With that extra run, the score of into double figures, 10 for none. Over number 2. We are into the KCD, Adi Builders and Developers power play period.
Last season, Ajay Joshi was one of the major finds. A little agey at the moment, a little nervous. Collie wobbles, butterflies in the stomach. This season too, Ajay Joshi has really bowled very, very well. He's done his reputation no harm. But tonight he's got to come out with that fire in the belly. He's got to fire on all cylinders. He's got to be at his very best. Gets the perfect shape this time. The ball was slightly wobbling as it moved in late into the batsman. Getting right to the pitch of the delivery, looking to smother whatever movement there was in that delivery, working it away into that leg side area. With that couple, the score now on 212. Looking to play with a cross bat. The shot selection will always remain the key. You have to pick and choose your shots most perfectly. 14 for no loss. We are into over number 2. Oh, looking to play with a cross bat. Nicely done by Sanju. On the back of that very good knock the other day, is looking to carry on in the same vein. It will be such a big blessing if Sanju Gangir can really come into his own. If he can find his bearings in this big ticket match, that will indeed be a big bonus for Vijay Singh and team riders. Well done and well played. This man, Yogesh Kotak, really has to play a big knock here. He holds the key. And if he gets going, I'm sure that we will be looking at a treat. Straight back to the bowler. One more ball to go in over number 2. The score at this stage is 16 for none. Still early days. Lots and lots of cricket left to be played in the match, ladies and gentlemen. Qualifier number 1. The big ticket match. The big league match. Obviously, there is a hint of a late movement. There is no doubt about it. End of 2 overs, the scoreline reads 17 for none. You got to be calm and belligerent, both at the same time. The good thing about both these opening batters for team riders is that they are looking to play with a straight bat. They're looking to play in the V, almost offering the full face of the bat. To negate the new ball, your best option is to play straight down the ground, play in the V, offer the full face of the bat. Quite an early change in bowling guard. It's going to be Devesh Mehta to bowl from the far end, over number 3 of the KCD power play.
Welcome to Alok Somani. Vivek Bhai Nasser, yeah, the GC member and the Health Club chairman, is also having a look at the match. Tomorrow it's going to be the eliminator. Very important match. He's got that slinging action, drifting down the leg side. Off to a good start here. बहुत ही बढ़िया पिचिंग. उस गेंद को रोकना चाहिए था देवेश ने अपने फॉलो थ्रू में. 1 रन की बढ़त के साथ रन संख्या अब 19 रनों पर. 19 रन बिना कोई नुकसान के. शतरंज की बाजी सजी हुई है. तलवारें खींची गई है. ने जंग की यलगार पुकारी है. इससे बड़ा मैच क्या होगा. प्लेऑफ्स का ये पहला मैच, क्वालिफायर नंबर 1, टीम वॉरियर्स बनाम टीम राइडर्स. थोड़ा सा पिछली खेला लेकिन टोटल कंट्रोल में थे. किसी भी तरह से उस शॉट के दरमियान किसी भी वक्त किसी भी तरह के खतरे में नहीं थे. बहुत ही स्मार्ट चेतक प्ले बाउंड्री. इस चौके के साथ रन संख्या थोड़ी सी तेज रफ्तार से बढ़कर अब 23 रनों पर. 23 रन बिना कोई नुकसान के. थोड़ी सी खबरदारी का इख्तियार करना होगा. राजेश पटनी ने इस मैच के टॉस को जीत के गेंदबाजी का चयन किया. थोड़ा सा दोनों पिछली खेला सलामी बल्लेबाजों का रवैया total देख control लीजिए, में बॉडी थे. लैंग्वेज देख किसी भी लीजिए. तरह एक से संदेशा पहुंचाते उस हुए टीम शॉट- वॉरियर्स को कि आसान नहीं होगा. हम यहां पर इस मैच को जीतने के लिए पधारे हैं. Bending his back just a little more down the leg side. This time from the corner of the crease, the back of length delivery. The approach of both these batters will really depend on what the game plan has been structured for team riders. It all depends on the game plan. कि पहले 6 ओवर्स में कितने रन्स सोचे हैं टीम राइडर्स ने. सिंगल सेविंग पोजीशन में फील्डर मौजूद शैलेश चाडवा इनसाइड द सर्कल. रन संख्या थमी हुई 25 रनों पर. बढ़िया टाइमिंग, करारा जवाब दिया उस हाफ वॉली गेंद को संजू गंगीर ने और अपने खाते में एक बहुत ही शानदार चेतक प्लाई चौका दर्ज किया है. पूरे टूर्नामेंट में थोड़े से साधारण फॉर्म में थे लेकिन कल उस अच्छी इनिंग्स के बलबूते पे प्लेऑफ्स में देखे किस बढ़िया टाइमिंग, करारा सकारात्मक जवाब दिया रवैये के उस साथ हाफ बॉल अपनी गेंद इनिंग्स को को मार्ग संजू प्रशस्त गंगीर करते ने हुए और अपने खाते में एक संजू बहुत गंगीर. ही शानदार. चलिए टीम वॉरियर्स के प्लेइंग 11 की तरफ रुक करते हैं. सुनील देवली, राजेश पटनी, पराग शाह, नितिन गनात्रा, आनंद संगाई, मनु गौतम, देवेश मेहता, अजय जोशी, पराग जैन. सुपर सब बॉलर अल्पेश शाह, शैलेश चाडवा. बैटिंग सुपर सब आशीष गोयल, महेश शाह. ये स्क्वाड है टीम वॉरियर्स का. कितनी धनवान टीम नजर आती हुई पेपर पर. वाकई में बहुत ही जबरदस्त हुनर, प्रतिभा, अनुभव और इसी वजह से इस टूर्नामेंट में नंबर 2 के स्थान को हासिल किया है टीम वॉरियर्स ने. देखते कि टीम राइडर्स के खाते में क्या है. विजय सिंह, रवि नारायण साहू, सचिन शर्मा, हेमंत मोहिते,
योगेश कोटक, दीपेश ठक्कर, दीपेश मेहता, बॉलिंग सुपर सब जगदीश बिसावा, सुमेश देवरा, सुनील रहेजा, सुधीर आंचन, दीपक शाह, संजय गंगीर। बैटिंग सुपर सब है दीपक शाह। ये भी कोई कम धनवान टीम नहीं है, उससे लिहाज से बहुत ही तगड़ा मुकाबला होगा ये वाला क्वालिफायर नंबर 1। अच्छी तादाद में सभी दर्शकगण यहां पर मौजूद और ये संख्या बढ़ती रहेगी अगले 1 घंटे तक। Switching ends for Ajay Joshi. He will be bowling from the Selo Pavilion end as he goes away from us. The man on strike, that is Yogesh. All set. Oh, what a smart shot from a very smart batsman, Yogesh Kotak, coming into the scheme of things. A very smart Chetak play boundary. He played with the movement, didn't play against it, just helping it on its way, just guiding it along. The moment it passed the man in that fine leg area, it had a Chetak play boundary written all over it in bold letters. With that boundary, 33 for no what a loss. smart shot from a very smart batsman, Yogesh बिना कोई नुकसान के बहुत ही आला शुरुआत। जो भी कुछ योगेश और संजू गंगीर की तरफ से देखने को मिला है, वाकई में दिल लुभाने वाला क्रिकेट खेलते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल अपनी रंगत में नजर आते हुए। This kind of a start will cool the tension in the camp of team riders and they will be better placed to negotiate this first playoff. The match on, the game on. Good comeback delivery from Ajay. Was not looking for any movement there. That was slightly back of length. He fired that one in. That was a very good line outside the off stump. Channel bowling. Was a miscued shot. भाग्यशाली रहे योगेश कोटक कि वो गेंद फील्डर तक नहीं गई। एक रन के साथ रन संख्या 34 रनों पर। शाही फतवा जारी किया है दोनों ही कप्तानों ने, कर हर मैदान फतेह किसी भी हालत में। देखना है कि कौन सी टीम अपना वजूद बरकरार रखती है। दोनों ही टीम्स शानदार टीम्स। अच्छी गेंद। उस चौके के बाद इस ओवर में सूझबूझ के साथ एक वापसी की है अजय ने। बहुत ही ज्यादा मेहनत करते अजय अपनी गेम पर। He does not take his place for granted. That is the best part of his approach and attitude. In the hard yards. Mighty impressive with Sanju Gangir. Mighty impressive. Sloppy cricket. Sloppy cricket by Team Warriors. They have to tighten up their game. Do not want to be waiting for the qualifier number 2. जो भी कुछ करना है वो आज ही सुनिश्चित करना है इसी मैच में। कल क्या होगा पता नहीं, तो आज ही जीतकर अपनी स्थिति को सुनिश्चित करना है ग्रैंड फिनाले में। वाइड गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ होती तो पिक्चर परफेक्ट गेंद होती है। उस वाइड गेंद के साथ 37 रन बिना कोई नुकसान के। आशा आकांक्षा की महक इस वक्त जीएससी के इस खूबसूरत मैदान पे लहराती हुई। हर्षोल्लास का वातावरण। बढ़िया समा बंधा हुआ है प्लेऑफ्स में। दो शानदार टीम्स। इससे बढ़िया
माहौल क्या हो सकता है? सबसे बढ़िया माहौल। बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट से खेलते हुए संजू गंगीर और योगेश कोटक, वाकई में दाद देनी होगी। देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में थोड़े से साधारण नजर आए थे संजू गंगीर, लेकिन उन्होंने अपना फोकस नहीं खोया था। मैं हमेशा देखता था कि थोड़ा सा जल्दी आउट होने के बाद अपनी टीम से बातचीत करते थे, अपने कोचेस से बातचीत करते थे, सीनियर से बातचीत करते थे कि किस तरह से विकेट बिहेव कर रही है, किस तरह का अप्रोच होना चाहिए। तो पूरी तरह से गेम में बने रहते हैं संजू गंगीर। हमेशा सोचते रहते हैं कि किस तरह से मैं अपनी गेम को एक अलग पायदान तक ले जाऊं। मेहनत मशक्कत करते हैं, मेहनत रंग लाती हुई। तो दोस्तों, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 39 रन बिना कोई नुकसान के। आनंद संगाई को गेंदबाजी में इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, राजेश पटनी भी बहुत ही स्मार्ट कैप्टन है, बहुत ही स्मार्ट कैप्टन। कितना तगड़ा अनुभव है राजेश पटनी के पास, और थिंक टैंक में भी सुनील देवली जैसे सीनियर क्रिकेटर्स मौजूद है उन्हें गाइड करने के लिए। कि किस तरह से लगातार अपनी गेंदबाजी में चेंजेस दर्शाते हुए destroying everything that is at his disposal to break this opening partnership. So yes, Rajesh Patni is a very smart captain, the right man to be leading this wonderful team of Warriors. Big thank you to the owners as well, Nitin Singhal, Lalit Vij, Rajesh Patni. They are the 3 owners. Big thank you to Jayesh Jogia, Hiren Mehta, Vishal Todi, Sunil Raija, the owners of the team Riders. Playing with soft hands, keeping the strike rotating at all times. Both are relatively set and they are looking to play a big innings. दोनों ही बल्लेबाज एक लंबी पारी खेलने की फिराक में नजर आते हुए। जो भी बॉडी लैंग्वेज है, जो भी रवैया है, बहुत ही शानदार है। बढ़िया गेंद आनंद संघाई की। पहला कदम उठा विमान से, पहला कदम उठा विमान से, सपनों की क्या मजाल के पूरे न हो। डटे रहो, लगे रहो। No matter what the match situation is, keep hanging. This could be curtains. This could be a suicide. That was a suicide. That is so tragic. Shakti Plastic Industries wicket. Oh my God. This is such a big tragedy. He was playing so well. The only way he could have got out is run out. Exactly what they were looking forward to, team Warriors. He gets his man, Rajesh Patni. Never mind even if it's a run out, but they get the key man, Sachin Sharma, the new man at the crucial number 3 spot. This man has also been in tidy form. Situation is keep hanging. Oh, let me make one point very clear. Since yesterday, after the break, this wicket is a superb batting wicket. The tinge of grass is making the ball come onto the bat. The opening batters will really relish the ball coming onto the bat. Just play through the line on the rise. There's so much of grass cover on the wicket. Sanju Gangir getting out against the run of tide. He's left his job undone. अपने काम को अधूरा छोड़ा है, अधूरा रखा अपने काम को।
ये ट्रेजेडी है। नए बल्लेबाज सचिन शर्मा भी इस टूर्नामेंट के दरमियान काफी अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं। पूरी तरह से अच्छी एफर्ट लगाते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छी चैनल गेंदबाजी, थ्रू द लाइन ऑन द राइस, थोड़ा सा खेला हल्के हाथों से, आखिरी वक्त पर कलाई के सहारे उस गेंद को मोड़ दिया पॉइंट की दिशा में। बड़ी आसानी से उस रन को लेकर अपने खाते को खोला है सचिन शर्मा ने। उस एक रन के साथ रन संख्या 41 रन, एक विकेट के नुकसान पर। .42 with that single. Yogesh Kotak has played only 14 balls for his very smart 21. Very nicely done. This is one of his pet shots. He likes to play square of the wicket. Standing tall on that one, punching it away, getting right on the top of that delivery. End of over number 5 of the KCD Adi Builders and Developers power play period. The scoreline reads 43 runs for the loss of one Shakti Plastic Industries wicket. The man back in the dugout is Sanju Gangir, courtesy run out. That's the way this game goes. Happens once in a while. One will feel for Sanju Gangir because he was playing so well. He was below his best in the tournament so far, but he was starting to get into his best. Unfortunately, that good innings comes to an abrupt end. Back into the attack, one of the key bowlers, that is Manu Gautam. He reminds us of Chris Harris. That New Zealand bowler, what a miserly bowler Chris Harris was. He used to bat left-handed. He always used to field in that point area. To the spinners, he used to come into that cover area. Chris Harris, he was the best fielder of his time. इतनी शानदार टीम थी न्यूजीलैंड की। रिचर्ड हैडली, Mark Greatbatch, Martin Crowe, even Chatfield, Chris Harris, Chris Keynes, Ken Rutherford, yes, Jeff Crowe. वो सुबह सुबह 4:30-5 बजे हम टीवी ऑन करते थे न्यूजीलैंड के मैचेस देखने को। एक अलग ही समा होता था तभी। लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू मार्क ग्रेटबैच, जिन्होंने वो पिंच हिटिंग को अंजाम दिया। मार्क ग्रेटबैच, कालू वितरणा, सनत जयसूर्या, दे ऑल स्टार्टेड दिस होल पिंच हिटिंग. दे वर द पायनियर्स. चलिए हमारे मैच की तरफ रुख करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट मैच तो हमारे लिए यही है, हमारा इंडियन प्रीमियर लीग यही है. पांच साल पहले अजय जोशी इस कैच को ले लेते, पहुंच जाते गेंद तक. पैंतालीस रन एक विकेट के नुकसान पर. Each and every player has been assigned a role, isn't it, by both the captains. पूरी तरह से विनिंग स्क्रिप्ट को लिखा गया है, बस अब जरूर है कि उस स्क्रिप्ट पर खरे उतरे.
What a good delivery that was. This is a very smart captaincy by राजेश पटनी. देखिए पहला ओवर जो dismissal, soft dismissal, wrong shot, a wrong choice of shot. That is wicket number 2. Shakti Plastic Industries wicket falls. The danger man Yogesh Kotak is on his way back, and to replace him, arriving at the wicket is Mr. Consistency, Mr. Dynamism, sort of Mr. Cricket, Hemant Moite. 46 for 2. What a smart catch by Rajesh Patni. 4 ओवर के बाद 39 रन थे बिना कोई नुकसान के, और अब आलम यह है कि 5.5 में 46 रन, 2 विकेट्स गिरे. 7 रनों में 2 विकेट्स गिर चुके. Final ball to come in this over. अपनी गेम के हर बिंदु पर ध्यान देना होगा, हर पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा. Once you get going, make sure that you convert it into a match winning effort. केवल एक अच्छे स्टार्ट से काम नहीं बन पाएगा. You have to convert that good start into a match winning effort. The batters were looking so good. वाकई में कितनी प्रभावशाली बल्लेबाजी कर रहे थे संजू और योगेश. दुर्भाग्यवश टीम राइडर्स के लिए दोनों ही बल्लेबाज 7 गेंदों के अंतर में पेविलियन में वापस आ चुके. दे फ्लैटर्ड टू डिसीव. Warm welcome to Mihir Vora, Dinesh Yadav, Rishi. End of the power play period. 6 ओवर के बाद 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 39 for 2 थे और अब 46 for 2. इससे बेहतर बात क्या हो सकती है राजेश पटनी और टीम वॉरियर्स के लिए. अब थोड़ी सी खबरदारी का इख्तियार करना होगा, थोड़ा सा गेम प्लान को रिविजिट करना होगा, और बिल्कुल करेंगे. जिस टीम का प्रतिनिधित्व बतौर कप्तान विजय सिंह करते हो, और जिस टीम में रवि नारायण साहू जैसा कोई प्लेयर हो, सुनील रहेजा जैसा, तो सीनियरिटी को लेकर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. गेम प्लान तो ठीक तरह से बना ही होगा, एग्जीक्यूट करना है गेम प्लान को सही मायनों में, ये चुनौती है. जहां पर कुछ ही समय पहले मामला थोड़ा सा गड़बड़ा हुआ था टीम वॉरियर्स के लिए, एक वापसी रची है, थोड़ा सा मोमेंटम अपनी तरफ खींच लिया है टीम वॉरियर्स ने. उसके बावजूद कहना होगा कि काफ़ी अच्छी शुरुआत है टीम राइडर्स के लिए. टीम राइडर्स ने इस मैच के टॉस को हारने के बाद आमंत्रित किए गए थे बल्लेबाजी करने के लिए. ये वाला मैच दोनों टीम्स के मानसिक धैर्य को चुनौती देगा. You have to be very strong in the mind. Change in bowling guard, and it is Rajesh Patni now to bowl from the in-orbit end. क्वालिफायर नंबर 1 में एक बड़ी उड़ान भरनी होगी और एक नया अफसाना लिखना होगा.
बहुत ही बढ़िया शॉट, एफर्ट तो लगाई बिल्कुल शैलेश चाडवा ने, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। चेतक प्ले बाउंड्री, उस चेतक प्ले बाउंड्री के साथ 50 रन बन चुके हैं टीम राइडर्स के। 50 up on the board. Boundary coming in after 18 balls. अठारह गेंदों के बाद गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए उस चौके को जड़ दिया सचिन शर्मा ने। स्क्वायर ऑफ द विकेट, मैंने पहले ही बताया कि ये काफी मजबूत पक्ष है सचिन शर्मा का। जरूरी है कि सचिन शर्मा भी अब एक बड़ी पारी खेले, हेमंत मोहिते के साथ अपनी इस इनिंग्स को संवारना होगा पहले तो, और फिर सजाना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा मोमेंटम अपनी तरफ खींचा है, हालांकि काफी क्रिकेट खेलना बाकी है। वापसी तो रच दी है टीम वॉरियर्स ने। हल्की सी नीचे रही वो गेंद, सेमी न्यू बॉल के साथ गेंदबाजी करते हुए इस विकेट में घास भी ज्यादा है तो टर्न बहुत ही कम नजर आता हुआ इस वक्त। इतनी नजाकत से खेला। देखिए पूरी तरह से उस ऑफसाइड कॉर्डन को पैक किया है। वहां से गेंद का निकलना बहुत ही मुश्किल है ऑफसाइड पर। ऑफसाइड की फील्ड को पीएस करना है तो बहुत ही करारा शॉट लगाना होगा, अच्छी टाइमिंग के साथ बिल्कुल स्पॉट ऑन प्लेसमेंट दर्शानी होगी। 51 रन दो विकेट के नुकसान पर। पहला अंजलि किचनवेयर ओवर अपनी प्रगति पथ पर, एक गेंद आनी बाकी है। ओवर नंबर 7। इनका ट्रेडमार्क शॉट है। He literally walks into that shot, especially when he's new to the wicket. He plays that shot so consistently. End of 7 overs, 52 for 2. Good evening, ladies and gentlemen, and a warm welcome to the playoffs. This is the business end of the Selo 45 plus T20 League, match number 37 underway. Tomorrow it's going to be the eliminator. No second chances on offer tomorrow as the team Chargers take up a team Superstars. It's going to be over number 8 and bowler number 6, Sunil Devli, to bowl from the in-orbit end. Very, very experienced man, Sunil Devli. He's a bowling all-rounder. उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजी से ज्यादा मजबूत है और काफी फिट प्लेयर है सुनील। बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। He remains to be one of the key bowlers and he has to be at his very best. इनके अपने 4 ओवर्स में सुनील देवली ने एक स्टेटमेंट देना होगा। On the other hand, Hemant Moite and Sachin Sharma will have to be dealing in that currency of runs. जितने रन्स एक्यूमुलेट करोगे उतने कम होंगे। बहुत ही बड़ा मैच है ये वाला।
स्टीयर किया बैकवर्ड ऑफ पॉइंट एरिया में, वहां पर शैलेश चाड़वा मौजूद। ये मैच नंबर 37वां है। 36 मैचेस में 10,180 रन बने हैं, 524 विकेट्स गिरे हैं, 7,867 गेंदें गिरी है, 1240 एक्स्ट्राज है, 890 चौके और 112 छक्के, 26 50s। तो ये थोड़े से स्टैटिस्टिक्स थे नटशेल में। The app makes our job so easy. So we cannot do without the scoring app in the modern day cricket. बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और कितने ने खूबसूरत तरीके से गैप को पिक किया। चेतक प्लाई चौका सचिन शर्मा के लिए। स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ही अच्छा खेलते, छोटी सी गेंदों पर अच्छी पोजीशन में आकर प्रहार करते हैं, ये उनका फेवरेट शॉट है। और जब अच्छे फॉर्म में होते हैं तो ये वाले शॉट्स बिल्कुल फ्लो में निकलते उनके बल्ले से। 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर सचिन शर्मा जा पहुंचे 13 रनों पर 13 गेंदों का सामना करते हुए। That single the score now on to 60. This partnership has to go on for the next 20 minutes, ideally. Now Sachin Sharma, who's played 13 balls, he needs to make sure that he plays at least 32 balls. कम से कम 32 गेंद तो खेलनी होगी, 30-32 गेंद। मंशा तो यही होनी चाहिए कि 36 के 36 गेंद खेले। सेट होने के बाद उस तरह की इनिंग्स बनती है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार बैटिंग विकेट, इट्स अ बैटिंग पैराडाइज द लास्ट 3-4 days. In comes Parag Jain. Change in bowling guard. वेलकम टू जलगांवकर, हिमल दवे, सभी का स्वागत है। प्लेऑफ्स यानी कि वो टेंशन वाला मामला, सीरियस मैचेस, तगड़े मैचेस। मैच नंबर 37, कल मैच नंबर 38 एलिमिनेटर, परसों ने नरसों क्वालिफायर नंबर 2 और 7 अप्रैल को ग्रैंड फिनाले। Welcome to Ritesh. What a performer Hemant Moite has been in this tournament. Hemant Moite and Vijay Singh have been the two showstoppers for Team Riders. They've taken the onus on their shoulders. 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स तो विजय ले चुका है। 2 मैन ऑफ द मैच के खिताब शायद हेमंत मोहिते ने लिए है। 3 ईच।
पराग जैन कैन बी अ वेरी ट्रिकी कस्टमर. आसान नहीं उन्हें हैंडल करना. थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट आप पराग जैन को करोगे तो फिर विल हैव टू पे अ बिग प्राइस. और अच्छे फॉर्म में है इस टूर्नामेंट के दरमियान पराग. यही तो मैंने कहा था कि आप पराग को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. बड़ा खामियाजा भुगतना होगा. और दैट इज द बिग फिश इन द नेट. हेमंत मोहिते मिसिंग आउट ऑन अ रैंक हाफ वॉली. दैट शुड हैव बीन ड्रिवन डाउन द ग्राउंड विद अ स्टिल हेड. थोड़ा सा क्रॉस केला. सर थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस था. कितनी बड़ी विकेट पहले ही ओवर में. क्या स्मार्ट मूव है राजेश पटनी का. दैट इज इंडीड the prized scalp. This could have huge ramifications on the result of the match. The big man gone. Shakti Plastic Industries wicket to the credit of Parag Jain, and the new man in now, that iconic captain Vijay Singh. थोड़ा सा जोर से खेलने का प्रयास किया. He did not caress the ball. लीन होके खेलते तो कवर ड्राइव हो सकता था. But you cannot take anything away from Hemant Mohite's super performance in this tournament. The dedication, the commitment from Hemant Mohite is always exemplary. Now in quick time, he has to forget what has happened because he's got a very, very important role to play as a bowler. इतने अच्छे फॉर्म में हेमंत मोहिते के we all were expecting one more good knock from him. But that's the way the game goes. This is the beauty of the game. And what a wicket to Parag Jain. Wow. अभी तक अपनी कप्तानी के लिए he gets at least 8.5 out of 10. Rajesh Patni, 8.5 out of 10. Still a long way to go. Vijay Singh के क्या कहने इस टूर्नामेंट में. Everything that is touching is turning to gold in this tournament. Only 4 runs are given away in his first over, and he's got that big fish in the net. That very important Shakti Plastic Industries wicket off Hemant Mohite. 64 for 3. 9 overs gone. ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल होगा. थोड़ा सा क्रॉस के लिया. सर भी थोड़ा सा. The head fell. The head fell to the right side and the bat was aimed towards the mid-wicket area. In comes Zian. Ala re ala. Zian ala. Welcome to NK Maheshwari. Welcome to Sushil Gautam. Still have Sunil Raheja, Ravinarayan Sahu, दीपेश ठक्कर. तो इतना चिंता का भी कोई विषय तो है नहीं, लेकिन दाद देनी होगी टीम वॉरियर्स की. जिस तरह से डटे रहे, लगे रहे, बहुत ही शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप रंग ला रही थी. रंग में भंग डाला उस रनआउट के माध्यम से. बहुत ही बढ़िया गेंद. Warm welcome to one of our key organizing committee members, Manish Bhai Sharma.
Sudhir Ranchan is the runner for Vijay Singh. Sachin Sharma has played 17 balls so far for his 16. Played. He's going about his job very coolly. That is the good news for Team Riders. He's looking absolutely unfazed as the wickets have fallen at the other end. He's looking unfazed. He's standing tall amongst the ruins. Sachin Sharma is holding 4 to 1 end. सड़सठ रन 3 विकेट के नुकसान पर इस इनिंग्स का 10वां ओवर अपने प्रगति पथ पर है. बहुत ही अच्छी चैनल पकड़ी है सुनील देवली ने, कंसिस्टेंटली उसी एरिया में गेंदबाजी करते हुए. मिलिट्री लाइन एंड लेंथ इसे कहते हैं, मेट्रोनोमिक बॉलिंग, उस तरह की चैनल गेंदबाजी को. व्हाट अ डिलीवरी. बहुत ही शानदार सीम प्रेजेंटेशन. तो चलिए दोस्तों, 10 ओवर्स की समाप्ति के बाद रन संख्या 67 रन 3 विकेट के नुकसान पर सचिन शर्मा ने अपनी 20 गेंदों में 17 रन बनाए और विजय सिंह काफी नए हैं विकेट पर, केवल 4 गेंदों का सामना किया है. मिलते हैं ब्रेक के उस पार. दैट इज द ड्रिंक्स इंटरवल. Welcome to Mr. Nikhil Patel.
वेलकम बैक। अब तक के इस मैच को अगर हकीकत के तराजू में तोले तो मोमेंटम अपनी तरफ खींच लिया है टीम वॉरियर्स ने। पहले 4 ओवर्स बिल्कुल टीम राइडर्स के पक्ष में थे। जैसे ही वो रन आउट हुआ संजू गंगीर का, वो 11 गेंदों में जब दूसरा विकेट भी गिरा, 11 गेंदों के अंतर में वो मैच का पासा पलटा। फिर और एक विकेट गिरा है 10 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उससे लिहाज से वाकई में कहना होगा कि थोड़ा सा शिकंजा कसा है टीम वॉरियर्स ने। काफ़ी क्रिकेट खेलना बाकी है एंड दे कैन रियली बैट क्वाइट डीप। So let's see how it unfolds, the second half of this innings of Team Riders. Players like Sumesh Devra and Sudhir Anchan and the others will be praying that they do not get a chance to bat. But if at all they come into bat, the tail has to wag for Team Riders. They have to put on some important runs. स्वागत है एडवोकेट वैभव बगाड़े का। ऑरेंज कैप असलम भाई 1 नंबर 282 रन्स, श्रीगोपाल जाजू 246 रन्स। Aslam Bhai cannot take further part in this tournament, nor can Shrigopal Jaju. The man at the number 3 spot in the orange cap standings is Anand Sanghai, 241 runs for Team Warriors. Purple cap is on the head of Vivek Narsari at 13 wickets. Amol Polke, Blasters, they are out of the tournament, 12 wickets. Vaibhav Bagade for Team Chargers, number 3 spot, 11 wickets. Parag Jain now comes on to the number 4 position with 11 wickets. थोड़ी सी कश्मकश में डाला था सचिन शर्मा को कि फ्रंट फुट पर खेले या बैक फुट पर। उतनी अच्छी पिचिंग थी, अपनी लय को प्राप्त किया है बिल्कुल अपने आपे में। अब रंगत में आकर बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पराग जैन, दिस इज विंटेज पराग। और इतने बड़े मैच में इतनी सटीक नपीतुली गेंदबाजी करना, यह वाकई में एक बहुत बड़ी देन है राजेश पटनी के लिए। Well driven. Devesh Mehta in that mid-off position. Crouching Dragon, Vaibhav Bagade is at the number 3 spot. See, he will get a chance. Team Chargers के 2 players पर्पल कैप के स्टैंडिंग्स में है, विवेक नरसरिया नंबर 1 एंड वैभव बगाड़े नंबर 3। पराग जैन आपने आज के इस मैच के स्पेल के बलबूते पर पर्पल कैप स्टैंडिंग्स में 11 विकेटों के साथ 4 नंबर के स्थान पर आ चुके हैं। ग्यारह ओवर्स के बाद 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बुलंद हौसलों के साथ अपनी इनिंग्स को मार्ग प्रशस्त करना होगा विजय सिंह और सचिन शर्मा ने।
सुनील देवली का स्पेल बरकरार, स्विच इन एंड्स, अब गेंदबाजी करेंगे सेलो पेविलियन एंड की तरफ से। इस बीच विपुल कल्याणी का भी स्वागत है। अच्छी संख्या में सभी क्रिकेट श्रोता मौजूद है। द प्रॉब्लम शूटर फॉर द टीम, दैट इज विजय सिंह। बिल्कुल अपनी टीम का सिकंदर प्लेयर है, रुस्तम प्लेयर है। क्रिकेट की पाठशाला दीपेन पटेल कल अपना करिश्मा दिखाएंगे। कल के मैच की बहुत ही ज्यादा चर्चा है जीएससी की गलियारों में। फिलहाल कल के मैच की सबसे ज्यादा चर्चा है क्योंकि एलिमिनेटर है, बहुत ही बड़ा मैच। कल के मैच की धूम मची हुई है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब पर। देखना है कि कौन सी टीम इस टूर्नामेंट के अंत में बिलीवर से अचीवर बनती है। बिलीवर से अचीवर बनने के लिए वो खिताब हासिल करना होगा। यू कैनॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन द चैंपियनशिप ट्रॉफी, दैट इज द सेल ऑफ 45+ T20 लीग टाइटल। इट्स नॉट गोइंग टू बी कमिंग इजी. It's not going to be offered on a plate. You'll have to put in your sweat and blood to get that trophy. A very big inside edge, biggish and a thickish inside-ish edge, 75 for 3. Sachin is on to 20 of 24 balls, very workaholic. What a spell this has been from Sunil Devli. He's bending his back, good seam presentation, good release of the ball. That wrist is absolutely behind the seam. Oh, what a catch! What a catch! Manu Gautam, he was never going to be dropping that one. Sachin Sharma is on his way back to the pavilion. That's a very important Shakti Plastic Industries wicket. Not able to get under the ball. Not able to get the desired elevation. In the bargain, straight down the throat of the man in that position inside the circle, at the edge of the circle. Manu Gautam. In comes the marquee player, Ravi Narayan Sahu. He's got to come good with the bat now. What Vijay Singh and Ravi Narayan Sahu do in the next 20 minutes will pretty much decide the course of the match. He did his job pretty tidily, although कहना होगा कि even Sachin Sharma left his job undone. अधूरा छोड़ा अपने काम को. इतने बड़े मैच में अगर फ्रंटलाइन प्लेयर्स अपने काम को अधूरा छोड़ेंगे तो फिर दिक्कतों का सामना करना होगा. क्रिकेट गेम में यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनीबडी एल्स टू डू द जॉब. यू गॉट टू गो आउट देयर एंड डू द जॉब योरसेल्फ. Especially when you are in good form, make the most out of it. Sunil Devli has got just one ball to go in the third over. He's given away only 13 runs and he's picked up that key man of that key wicket of Sachin. A very miserly spell from Devli.
put in that dive, he put in that effort. Welcome to Mrs. Tucker, welcome to Mrs. Sahu. Mrs. Raheja, Mrs. Gangir. The family members are out here, and जब family members आते हैं तो एक अलग माहौल बनता है. भक्तिशा मैडम का भी स्वागत है. केवल गेंद को रिलीज कर रहे हैं बिजनेस एरिया में, परफेक्ट एरिया में गेंद को लैंड कराते हुए. That couple the score now on to 79. Oh, he gets his hand to it. He took the pace of that ball. So that was really very well done. Not afraid to toss the ball up. $81 for 4. Vijay Singh has been smoking hot in this tournament. What an effort by Sunil Devli. As I mentioned earlier, the whole team is all pumped up. The adrenaline is flowing big time in the veins of Team Warriors. That was an awkward bounce, but he had the eyes on the ball till the very last moment. That was the key. आखिरी वक्त तक अपनी नजरें गेंद पर जमाई रखी. अच्छे रिफ्लेक्सेस, अच्छी पोजीशन में आए. काफी फिट है सुनील, मैंने पहले ही कहा. ओ मिस कर गए देवेश. फल स्वरूप चेतक चौका. Chetak play boundary. तेरह अंजलि किचनवेयर ओवर्स की समाप्ति के बाद 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर
पराग जैन 3 ओवर 20 रन 1 विकेट। अगर वो चौका न लगता तो 3 ओवर्स में 17 रन होते। अभी तक कोई भी चौका कंसीड नहीं किया था और वो चौका भी रुकना चाहिए था। में काफी सूझबूझ के साथ पराग जैन ने एक कितना बड़ा विकल्प प्रदान किया है राजेश पटनी को। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। वेलकम टू माही ठक्कर। विमेंस क्रिकेट का परचम लहराता हुआ पूरे क्रिकेटिंग विश्व पे। और विमेंस प्रीमियर लीग हैज बीन द बिगेस्ट बून फॉर द विमेंस क्रिकेट। सेकेंड एडिशन इस साल खेला गया और ये वाला विमेंस प्रीमियर लीग पहले साल से भी ज्यादा सुपर हिट था। और वो जब लास्ट ईयर बीसीसीआई ने मेन और विमेंस क्रिकेट को बराबरी का दर्जा दिया सैलरीज में, दैट वाज अ बिग थिंग, बिग मोरल बूस्टर फॉर विमेंस क्रिकेट। This is the time to get into women's cricket. This is the time for the girls to make cricket a big career option. Thousands and thousands of girls have started to play the game in India after the women's Premier League, and then the terrific performances from the Indian women's team, the equal pay grade. That is what has boosted the women's cricket in the country, not just in India, all over the globe. Anything that is fantastic cricket in India, that is a super hit all over the world. India always sets a benchmark. Mahi Thakkar is on the verge of Mumbai selection. She's had a couple of injury concerns the last season, but this year she is fit. She's got cricket in her genes. More than her dad. Her uncle is a more noted player, Joban Thakkar. 88 for 4. After we are into over number 14, 3 balls to go. Vijay Singh has been smoking hot in this tournament. He's been the showstopper alongside Hemant Moite. That is over the head of Manu Gautam. Prag there in the tee is able to save 2 runs for the team. That couple takes the score to 90 for 4. We are into over number 14. That is crashing into the boundary ropes. Chetak Ply boundary takes the score to 94. So he's not happy with that fielding effort, but still he's taking it in his stride. He's not getting the motivation factor down. That is what you got to do as a senior player. $94 for 4.
बांधे रखा है। वाकई में शानदार गेंदबाजी की है टीम वॉरियर्स ने। दे हैव बीन राइट ऑन द मनी, दे हैव बोल्ड टू अ गेम प्लान। At the moment, they are in total control. Total control, Team Warriors at the moment. शिकंजा कसा है। इस बीच वीरेंद्र चौधरी का भी तहे दिल से स्वागत है। 4 ओवर 21 रन, 1 विकेट। सुनील देवली। The job is cut out for Team Riders. They have to be at their very best. अच्छी फील्डिंग के चलते एक धार प्रदान हुई है टीम वॉरियर्स को। अच्छी फील्डिंग की बैसाखी उपलब्ध कराई है फील्डर्स ने, उसी वजह से इतनी अनुकूल स्थिति में है इस वक्त टीम वॉरियर्स। इसे एक बार गेंदबाजी में वापसी कराते हुए आनंद सांगाई की। राजेश पटनी अपनी टीम की पॉजिटिविटी की वैक्सीन। मैच की हर स्थिति में बहुत ही सकारात्मक रहते हैं राजेश पटनी। ही नेवर गिव्स अप। उनके नेतृत्व में टीम वॉरियर्स कभी भी दम नहीं तोड़ती है। नितिन सिंगल, ललित विज, राजेश पटनी जैसे शानदार सीनियर ओनर्स, they provide the right kind of ambience, the right kind of environment. At the moment they are on a roll. Ravi Narayan Sahu and Vijay Singh looking to resurrect the innings. टीम वॉरियर्स की सटीक गेंदबाजी इस वक्त मुसीबत का सबब बनी हुई टीम राइडर्स के लिए। इस बीच एक स्ट्रिकिश बाउंड्री, चेतक प्लाई बाउंड्री, स्वागतार्ह रन से जुड़ते हुए। उस दिशा में खेलने का प्रयास तो नहीं किया था, लेकिन एनी टाइम एनी डे दे विल वेलकम दैट बाउंड्री। विद दैट बाउंड्री द स्कोर ऑन टू 98 for 4. We are into over number 15. 4 balls to go. कुल मिला के 34 गेंद आनी बाकी है। 34 balls to come in this innings of team Riders. 2 fantastic players at the wicket, Ravi Narayan Sahu and Vijay Singh. There is nothing that both these players cannot achieve on the cricket field. They have seen it all, done it all. Iconic players, 2 of them. If at all Dipesh Thakkar gets a chance to bat, he will have to be at his very best. He will have to plunder a few quick runs. थोड़ी सी साधारण टाइमिंग, उसके बावजूद वो गेंद सीमे रेखा के उस पर। चेतक प्लाई बाउंड्री, 100 runs up on the board with that Chetak play boundary, breaking the shackles, looking to lift the tempo. इस ओवर में 2 चौकियां है। इसी मोमेंटम को बरकरार रखना होगा। इसी तरह से महत्वपूर्ण रन्स बटोरने होंगे। कम से कम 140-145 रन्स तो बनाने होंगे किसी भी हाल में। टीम राइडर्स ने आइडली तो 150-155 रन्स बनाना बनता है। देखते हैं किस तरह से ये इनिंग्स अनफोल्ड होती है। वाकई में छोड़ा।
आसान सा कैच था, लाइफ दी है विजय सिंह को 105। वापसी का रास्ता तलाशती हुई टीम राइडर्स अभी भी डटी हुई है, लगी हुई है, एक अच्छा सम्मानजनक लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर खड़ा करे। यू गॉट टू ट्राई आउट ऑल योर ऑप्शंस बिफोर यू सरेंडर। दम तोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। 105। Vijay Singh has played 20 balls, only 20. इस टूर्नामेंट में काफी सुर्खियों में बने रहे विजय सिंह अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कप्तानी के लिए। ठीक तरह से टाइमिंग को नहीं दर्शा पा रहे हैं। Struggling a little, but it's a very important thing that he stays at the wicket. Score after 15, 107 रन 15 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। रवि नारायण साहू ने केवल 7 गेंदों का सामना किया है। विजय सिंह ने अपने 31 रनों के लिए 21 गेंदों का सामना किया। Once again tonight is amongst some useful runs. थोड़ा सा दुआओं के काफिले को भी साथ ले चलना होगा टीम राइडर्स ने अच्छे क्रिकेट के साथ, और दाद देनी होगी टीम वॉरियर्स की ग्राउंड फील्डिंग की। कैचिंग इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग काफी दर्जेदार नजर आई है। कैचिंग को लेकर दे विल नॉट गेट टू हाई मार्क्स, एवरेज मार्क्स मिलेंगे। ग्राउंड फील्डिंग के लिए दे विल गेट गुड मार्क्स। अच्छे तेवर दिखाए हैं टीम वॉरियर्स ने। उस अच्छी शुरुआत के बावजूद राजेश पटनी ने लगातार अपने गेंदबाजों को बदलते रहे, और फलसफा यह है कि शिकंजा कस लिया है। काफी क्रिकेट खेलना बाकी है। एक अच्छी साझेदारी रंग लाती हुई विजय सिंह और रवि नारायण साहू के माध्यम से। वक्त की नजाकत को देखते हुए तेवर बदलने पड़ते हैं। When the going gets tough, the tough get going. That is the most remarkable thing about champions is how they win and not what they win. स्थिति में बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा टीम राइडर्स ने। They've got enough experience in their team to realize that and keep going. That wicket of Hemant Moite was really the key one. The most crucial factor was how Yogesh Kotak and Sanju Gangir got out after looking good. After looking good, they got out. देखना है कौन सी टीम जयकारा लगाती है, कौन सी टीम जयघोष लगाती है। जिस तरह की सोच और रणनीति राजेश पटनी ने बनाई है, वो इस वक्त बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल वाजिब है। Always keeps his thinking cap on at all times. He never gets that professional hat away from the scheme of things. दोनों ही टीम्स ने इस टूर्नामेंट के दरमियान अपनी प्रतिभा का लोहा बनाते हुए इस पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान सुनिश्चित किए हैं। टीम राइडर्स नंबर 1 के स्थान पर और टीम वॉरियर्स नंबर 2 के स्थान पर, और इसी वजह से क्वालिफायर नंबर 1 में आमने सामने। फ्लाइटेड गेंद और हवाई यात्रा पर गेंद निकली है। किसी भी तरह से कोई एतराज नहीं एरियल रूट लेने से।
2 रनों की बढ़त, 110 रन। विजय सिंह ने 22 गेंद खेली है अपने 33 रनों के लिए। 14 गेंद आनी बाकी है अभी भी अपने इस कोटा में। देखिए, योजना के तहत अब इस इनिंग्स को आगे बढ़ाना होगा, इनिंग्स को सजाना होगा। एक गेम प्लान और एक लक्ष्य रविनारायण साहू और विजय सिंह ने जहन में बना लिया होगा। मैच की शुरुआत में एक अलग स्कोर था, 10 ओवर के बाद रिविजिट किया अपनी स्ट्रैटेजी को और एक नया लक्ष्य उनके जहन में अब है। चार रन मिले, चेतक प्लाई चौका, महत्वपूर्ण चेतक प्लाई चौका। 115 रन बन चुके हैं। 16वें ओवर की 2 गेंद आनी बाकी है, यानी कि 26 गेंद आनी बाकी है। 26 गेंदों में अगर अपनी पूरी रंगत में खेलते हैं तो 38 से 40 रन बनते, कम से कम 36 रन तो बनते हैं। और अगर 35-36 रन बन जाते हैं तो 150 रनों का लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर नजर आता हुआ। अब किसी भी हाल में 150 रन बनना बिल्कुल जरूरी हो चुका है टीम राइडर्स के लिए। They cannot settle for anything less than 150, isn't it? This partnership is on to 40 of 23 balls. और एक चेतक प्लाई बाउंड्री। 24 गेंदों में 44 रनों की साझेदारी बनी है ये दो मार्की प्लेयर्स के बीच। इसी मोमेंटम को आखिरी ओवर तक बनाए रखना होगा, तब जाके वो 150 रन बनेंगे। एक अच्छी वापसी करती हुई टीम राइडर्स विजय सिंह और रविनारायण साहू के माध्यम से, दे आर बैक इन द मैच। ऑल ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, दैट सेल्फ बिलीफ is really coming to the fore, and that is why these two senior players are the brand ambassadors of the 45 plus cricket at the GSC. Oh, नीची सी रही हो गेंद, he gets his bat down in the nick of time. This is indeed a 24-carat gold partnership, isn't it? Just look at the time at which this partnership is assuming proportions. That over went for 13 runs. Rajesh Patni, 120 for 4 after 16, 24 balls to go. 6 wickets in hand. They've got enough firepower left. केवल 24 गेंदों का सामना करना है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक वापसी रची है इस पार्टनरशिप के बलबूते पर। They are back in the match. The game on, 120 for 4 after 16. 16 ओवर के बाद 120 रन। विजय सिंह ने 23 गेम खेले। रविनारायण साहू ने अपनी गेंदों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। Enough deliveries left. He spread only 11. So that should not be a concern at all. He's putting the foot on the pedal. And if Ravinarayan Sahu continues to play like this, the pressure will be off Vijay Singh. Manu Gautam back into the attack. Two very classy players up against each other. Ravi and Gautam. Such a good crowd here. A very big inside edge, thickish edge. 121. बहुत ही अच्छी वापसी की है. It's great to see that they are exhibiting stomach for fight, looking to take the fight to the enemy camp, Vijay and Ravi. Match is in a state of equilibrium at this stage. थोड़ा सा मोमेंटम फिर से एक बार स्थापित किया है. Good bit of work from Shailesh. Shailesh has got a good throw, and that is why Ravinarayan Sahu decided not to go for that second run. So 22 runs. परमिंदर भामरा जी का भी स्वागत है.
मिस कर गए मनु गौतम. Should have stopped that one. He had no business to let it go. Such a good fielder, such a fit player, such a senior player. That should have been stopped. 123 for 4. Over number 17, 3 balls to go. कुल मिला के 21 गेंद और बाकी है. The ball in the right area. He's making the batsman play. He's just bowling wicket to wicket. He's sticking to his basics. जो उनका मजबूत पक्ष है बस वही दर्शाते हुए, किसी भी तरह से कोई नई चीज को अंजाम नहीं देते हुए मनु गौतम. 124, 4 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर की 2 गेंद आनी बाकी है. मोड़ दिया है बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग में. थोड़ा सा सोचा कि वो तीसरा रन ले, अंत में नाकार दिया. सही कॉल. इस तरह की मैच की स्थिति में रनआउट के बारे में सोचना भी तो एक पाप होगा. 16.5 overs, 126 for 4. प्रगति पथ पर है 17वां अंजलि किचनवेयर ओवर. 1 गेंद आनी बाकी है. 19 बॉल्स लेफ्ट. इन 19 गेंदों में किस तरह से डेंट करते हैं टीम वॉरियर्स के प्रोस्पेक्ट्स को रवि और विजय, ये देखने लायक होगा. दोनों ही तुरम खान प्लेयर्स. ये उनका एक फेवरेट शॉट है रवि का. थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स नजर आते इस शॉट को खेलते हुए, लेकिन काफी अच्छा एग्जीक्यूट करते इस शॉट को. चलिए दोस्तों, 17 ओवर की समाप्ति के बाद 127 रन 4 विकेट के नुकसान पर विजय सिंह ने अपने कोटा की 25 गेंद खेली है. रवि नारायण साहू ने 15 गेंद. आलम यह है 17 ओवर के बाद 127 रन 4 विकेट के नुकसान पर. अब प्रश्न यही है, सबसे बड़ा प्रश्न जो इस वक्त उत्पन्न होता है, क्या टीम राइडर्स 150 के उस पार जाएगी? दैट इज द ओनली बोन ऑफ कंटेंशन एट द मोमेंट. दैट इज द की एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर एवरीबडी वॉचिंग दिस गेम. मैंने तो पहले कहा कि वो शतरंज की बाजी सजी हुई है. किस तरह से आपके मूव्स होते हैं वो इस मैच का रुख तय करेंगे. दाद देनी होगी राजेश पटनी की, जिस तरह से उन्होंने इस टीम को लीड किया इस पहले हाफ में, वाकई में काबिले तारीफ. दे आर प्लेइंग विद अ बिग हार्ट, रवि साहू एंड विजय सिंह, एंड दैट इज व्हाई दे आर बैक इन द मैच. इट वाज लुकिंग अ लिटिल टफ फॉर टीम राइडर्स, बट दिस फैंटास्टिक पार्टनरशिप has really saved the day for Team Riders so far. They are back in the match and now it could be anybody's game. Exactly the kind of total that the bowlers of Team Riders were wanting to be seeing on the board. Still some way to go. Flatter trajectory. He gets underneath the ball. Not so well timed. We'll have to wait and watch. They're going for the third run, maybe thinking of that third run, and oh yes, he goes across for the third run. Important runs being added. 3 runs off the very first delivery will put that some extra pressure on Rajesh Patni. He's not at all happy. दोनों ही कप्तान विजय सिंह और राजेश पटनी काफी एक्सप्रेसिव है. They do not hold back their emotions. ये उनका एक अलग पहलू है. राजेश पटनी और विजय सिंह very expressive. Falling well short of Devli. 131. Over number 18, 4 balls to go. 16 left to go in this innings. 16 गेंद आनी बाकी है. विजय ने 26 खेल लिए. 16 में से और 10 गेंद खेल सकती है अभी भी. 16 में से 10 गेंद आनी बाकी है उनके कोटा में.
तो पेस करनी होगी उस इनिंग्स को, एक गेम प्लान बनाना होगा कि किस तरह से मैं मेरे कोटा को खत्म करूंगा। एक 22 के रूप में एक रन खाते में जुड़ा। Oh, the wicketkeeper has made a late dash for it. Just look at Rajesh Patni, so vociferous. It's been referred and in comes into action for the first time this evening. That is Kiran Purandare. That was an impulsive reaction from Rajesh Patni. That very strong and assertive presence of Vijay Singh and Ravi Narayan Sahu in the middle has bailed the team out of trouble to a certain extent. The job is not done yet, but yes, to a certain extent, अपनी टीम की नैया पार लगाई है. The very strong and assertive presence of Ravi and Vijay. Mind you, success is rooted in being talented, strong in character, and sticking to the process. Always take care of the controllables. Do not worry about what is not in your control. Let them go away. Let them vanish. Do not worry about the uncontrollables. जो आपके हाथों में है उसी पर गौर फरमाइए, जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचिए भी मत. The finger goes up from the third umpire. That is out. Vijay Singh is coming back to the pavilion. You got to be very relentless in pursuit of your goals. Sunil Raheja, he can be a big striker. Dipesh Thakkar is there, so nothing to worry. The score is 134. New man in, Sunil Raheja. 134 for 5. कुल मिला के 14 गेंदानी बाकी है. 14 balls left. 18वें ओवर की 2 गेंद शेष है. It is now time for team riders to pump in that voltage. The dying moments, they need some very important runs, crucial runs. Time to pump up the voltage. 35 गेंदों में 59 रनों की पार्टनरशिप रंग लाई है. The 48th instance in this tournament wherein we have seen a 50-run partnership. Will they be able to score some crucial runs in the dying stage remains to be seen. जितने एक्स्ट्रा रन्स बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा टीम राइडर्स के लिए. इस वक्त रन संख्या 134 रन.
Rajesh Patni will not stop at anything to bring about the downfall of team riders. He will not stop at anything. And in the second half, when the bell rings, the frontline players, the key players have to up the ante. For both the teams in the second half, the moment the bell rings, the moment the second half gets started, the key players for both the teams, they have to up the ante. Vijay Singh is also exactly the kind of player who will do whatever it takes to remove their rivals. He will do whatever it takes. Vijay Singh, no charity. That is put away into that wideish mid-on area. A little bit of fumble will cost the team 3 extra runs. A very important boundary. He's fielded so brilliantly right through this tournament in this match so far. He was very brilliant on that occasion, and that's a very, very important Chetak play boundary to take the score to 139. This man is a special talent, Ravi Narayan Sahu. Some special skills cannot be taught or cannot be acquired. One has it or one doesn't have it. As simple as that. Special skills cannot be taught to any player by any coach. That is what you are born with. You either have those special skills or simply you do not have them. The special skills cannot be taught. Very key component of the team strategy, Ravi Narayan Sahu. Have to wait and watch. The ball was always going to be falling behind the man in that backward of point area. इसे कहते हैं आंखों में से काजल चुराना. Literally stole that run. 141. He's batted so well so far. Is Ravi Narayan Sahu all ready for that final sprint? Is he ready for that final burst? He's batted well so far. Plain Bolt. He gets his man. The big fish in the net. That will cost the team at least 8 to 10 runs. A big sigh of relief to see the back of Ravi Narayan Sahu, Shakti Plastic Industries wicket. The cricketing acumen of both the captains is going to be tested tonight, especially in the second half. Dipesh Thakkar definitely one of the beacon players, Manu Gautam, one of the standout players
1 run in the form of a bye takes the score to 142. कुल मिला के 9 गेंदानी बाकी है. Tonight it's a rendezvous between Team Riders and Team Warriors. Welcome to Amol Polke. The Yorker will have to be the next arrow there from Manu Gautam. Oh, important runs being added. Looks like it's going to be a Chetak ply boundary in the form of byes. 146. सात गेंदानी शेष है. They've indeed walked on an ocean of difficulty to get to this target. They've done well to get here, Team Riders. Nitin Ganatra, it's been a little bit of a struggle for him tonight. He's had to work a little extra hard. He's kept reasonably well, but sometimes you have to do more. Yes, battered knees. He's an injured warrior, Nitin Ganatra, but just look at the passion. Hats off to him. Plus में कितनी इंजरी कंसर्न्स होते हैं. Nobody is 100% fit. यस 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त फिट नज़र आते हुए. मोस्ट ऑफ देम आर कैरिंग इंजरीज. ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि 25-30 साल क्रिकेट खेलने के बाद आप फिट रहो. हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल. अगर आप बिल्कुल फिट हो तो इसका मतलब है कि आपने इतना क्रिकेट नहीं खेला है. It's a good crowd has gathered here, so buckle up. We're going to be watching a very fantastic second half. दोनों ही टीम्स ने तलवारें खींची है, लेकिन किसी भी तरह से कोई रंजिश नहीं है. नो एनिमोसिटी. $149. सी मिडल ओवर्स में टीम राइडर्स की इनिंग्स तितर बितर हुई थी, लेकिन क्या शानदार साझेदारी रवि और विजय के बीच वापसी रची है. Well timed and no chances whatsoever. He breaks the shackles here for a very, very important boundary. 150 runs up on the board, boys and girls. That is 153. Mission number 1 accomplished. Will it be enough to stop the juggernaut of Team Warriors?
Only and only time can tell. Mission 1 accomplished. These are important runs. इस तरह की स्थिति में हर एक रन यू कैन ऑलमोस्ट वे इन गोल्ड. इतना महत्वपूर्ण है एक एक रन इस तरह की स्थिति में. Trivedi never wants a chance. He always wants a chance to get onto the field. Very passionate Trivedi, a total team man. मेरी तो पूरी साइट ब्लॉक थी. मैं केवल सचिन शर्मा के रिएक्शंस देख रहा था. साइट तो मेरी पूरी ब्लॉक थी. चले, चेतक प्लाई चौका 159. मोमेंटम गैदर कर चुके हैं टीम राइडर्स. इस बात में कोई संदेह नहीं है. द मोमेंटम इज बैक इन द कैंप ऑफ टीम राइडर्स. वेल बोल्ड. वेलकम टू किशोर पांडे सर. Final ball to come, 159. That is a fighting total, isn't it? और एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स मेरे यतीश दूरी स्कोरर ने कहा है, अब तक 11 बार 160 रन बने इस टूर्नामेंट में और केवल 3 बार चेज हुए. केवल 3 बार चेज हुए हैं 11 बार में से. Team Warriors will take heart in the fact that 3 times 160 has been chased. Team Riders will take heart in the fact that 9 times the score has not been chased. तो दोस्तों, अपने सुनिश्चित 20 ओवर्स में रन संख्या बनी है वो है 159. मैच को जीतने के लिए 160 रन बनाने होंगे टीम वॉरियर्स ने. है जो भी दर्शक यहां पर मौजूद है सभी का तहे दिल से स्वागत. मिलते हैं ब्रेक के उस पार. टाइम फॉर अ कमर्शियल ब्रेक, टाइम फॉर अ डिनर ब्रेक.
requesting a team riders to take the field. The umpires have almost occupied their positions, and it's heartening to see that the batters are out at the center wicket before the fielders. Chasing 182, RCB are 4 wickets down, 3 wickets down. Oli Maxwell back, Mayank Yadav, that pace sensation picks up Glenn Maxwell to the very first delivery. That the pace of that delivery, 151 kilometers per hour. Welcome back to what promises to be a fantastic final half. Buckle up, this is going to be very interesting. 162 win, the opening pair of Ashish and Shailesh Chadwa at the wicket. Ashish has got the fastest half century to his name. Is the batting super sub Ashish, so he will be looking to make an impact. Very accomplished stroke player. अगर 10 से 12 मिनट अगर विकेट पे बने रहे तो चारों तरफ रनों को सजाएंगे. Got a good range of shots. It's good squarish of the wicket and also down the wicket. Thakkar, who's going to be bowling with the new ball. That is a bit of a surprise. He gets the new ball, bowling from the in-orbit end. Man on strike, Ashish. Lights, camera, action, play time. Sunil Raheja, the wicketkeeper. Shailesh for the first time in this match taking his guard. That is too wide outside the off stump.
score at this stage, it is 5 for none. Score at the end of the first over is 8 for none. 160 runs to win the match. It's going to be Hemant Moite to bowl from the far end. As always, is operating with the new ball right to this tournament. He's been incredible. And of tonight, he's got to be at his very best. The man on strike, Ashish. 160 to win. The score at the end of the first over, 8 for none. Oh, what timing! Super timing! Play boundary. That was in his range, although he played with the cross bat, but that execution was spot on. अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए, आक्रामक खेलना उनकी फितरत में ही है. इसी तरह का सकारात्मक नेचुरल क्रिकेट खेलते हैं. Naturally gifted player, Ashish.
that single. The score on 213. They have started on the right note. They've started in right earnest. Still a long way to go. The second half has just got started. Long way to go. This promises to be very exciting and interesting. Timed protection in the deep that came into his knees. Jagdish Bisawa, the bowling super sub, that must have hurt him. But he looks okay. That is the good news. That struck him into the knees. He's not afraid to play the shots. Chadwa is on to 5 of 5 balls and Ashish on to 9 of 6. Clean bowled. You miss, I hit. A ball that should have been played on the front foot. He looks to go back and play it in the bargain. Loses his wicket. That's an important one. Shailesh is on his way back to the dugout. Hemant Moite picks up a Shakti Plastic Industries wicket in the very first over. What a prized scalp for Hemant Moite. Tonight, Mayank Yadav has bowled the fastest delivery, 156.7. He's already picked up 3 wickets. He's beating the Australian batters for pace. So tomorrow, do not forget to have a look at the sports news. He will be all over, everywhere. Mayank Yadav, 3 wickets, 156 plus, the fastest delivery of the tournament. Manu Gautam now joins Ashish. Hemant Moite will be bowling with his tail up, courtesy picking up a wicket in the very first over. Well struck. He will not be playing the waiting game. That is the way he plays, aggressively. He's got a good head over the shoulders and he's got a good range of shots. GSC की भट्टी से ही पककर निकला है आशीष गोयल. इसी पटकी हुई गेंद दीपेश ठक्कर की केवल दिशा दी मनु ने
बैकवर्ड ऑफ पॉइंट की दिशा में खेला, वहां पर मौजूद सचिन। सत्रह रन एक विकेट के नुकसान पर। Good seam presentation, getting good purchase off the wicket, bending his back. Wanted to pull that ball away into that mid-wicket area, missing the line. The score remains stationary on 17 for 1. Oh, he misses that stop. Ravi Narayan Sahu does well to cut that boundary away. A good backup job by Ravi. 19 for 1. Over number 3 underway. 2 balls to go. Oh, well timed. Just look at the way he's picked up his spot. That's a super shot. Nihayati khoobsurat shot. One of the smartest Chetak play boundaries. Takes the score to 23 for 1. Ashish is on fire. He continues with his good form. But still a long way to go. He's got to stay at the wicket for quite some more time. Bouncing on that short pitch delivery. Now in this situation, Ashish has got a very important role to essay. 24 for 1 after 3. The run rate is right up there. Nothing to worry on that count. They've lost one man, but the match is in the balance at this stage. They're playing positively. They've got a good batting lineup. On the other hand, Team Riders have a good bowling brigade. So this is going to be interesting. It is the bowling of Team Riders up against the batting of Team Warriors, which will decide the fate of this match. Welcome to Mr. Narayan Sharma. Moite will continue. One over, 7 runs, 1 wicket.
They will be happy with only a single one run added in the form of a leg by, takes the score to 25. Start off over number 4, being bowled by Hemant Moite from the Selo Pavilion end. Well bowled and nicely worked away into the mid-wicket region with soft hands. Manu Gautam is the kind of player who will pick up the match situation to a nicety, and he will set up his game accordingly. He knows that this man is a very attacking player and he's in the mood to play the big shot. So he will be looking to give the lion's share of the strike to Ashish. Ashish is a rhythm player. Ashish is at his very best when he has most of the strike. The co-owner and the captain of Team Chargers, Vivek Nasaria, is gearing up for tomorrow, the Eliminator. That's going to be the biggest match. Eliminator is always the crucial match. (29 for 1). It has been a big boon for team riders the way Hemant Moite has shouldered the burden of being a new ball bowler. It's a white ball. The umpiring panel has had a good tournament. Mr. Ajit Putran, Mr. Raju Pawar and Mr. Kiran Purandare. Very good line outside the off stump, playing it into the deepish gully region. Sachin Sharma posted in that area. Well timed. He can pack a punch. (32 for 1). 96 balls and 128 runs to win the match with 9 wickets in hand. Current required and current run rate and the required run rate both the same. Over. Sachin Sharma being brought into the attack. Vijay Singh has marshaled this. Are such a good team. Very well stopped by Vijay Singh.
He always knew that after landing the ball will go a little to his right, and he was ready for that. He got into a good position accordingly. 33 for 1. Start of over number 5. No, says Ajit Putran. Leg by. Welcome to one of our key organizing committee members and also the co-owner of Team Chargers, that is Prasad Karkera. That is the Jensen LED lights and the Gandha Royal Refinery 6 off the blade of Ashish Goel. Commit the hour, commit the man. Once again making his stay at the wicket count a big time. Breaking the shackles, putting the ball away into the park. 40 for 1. What a start. Starting in right earnest. What a shot. Just look at the timing. What a connection. Gorgeous. He's at the top of his game. This is vintage Ashish. This is the best of Ashish that we all have got to witness in this Cello 45 plus T20. He's the danger man. When Ashish is in this kind of a mood, very difficult to stop him. The only way to stop him is to pick him up. Otherwise, to stop somebody like Ashish, who is so well set and who's got such a wide range of shots, tough to stop him. You got to set the right field and you got to bowl accordingly. The captain and the bowler got to be on the same page. Some food for thought for Vijay Singh. Ashish has played 17 balls for his 30. One more good connection, and this time not even Vijay Singh can stop it. Chetak play boundary is starting to take on Sachin Sharma. He realizes that maybe this is the opportunity. They wanted one very big over, and Ashish has decided that this is going to be that big over. शानदार पहलू दर्शाया इस इवेंट के दरमियान आशीष ने. It was as straight as an arrow. "17 runs from that over. That is the biggie. 49 for 1 after 5. KCD आदि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के 5 ओवर समाप्त हो चुके. रन संख्या 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. 90 गेंदों में केवल 111 रन्स बनाने हैं. 9 विकेट्स हाथ में है. खबरदारी लेनी होगी टीम राइडर्स ने. आशीष देखते देखते 19 गेंदों में 35 रन्स बना चुके हैं. ये उनका ट्रेडमार्क है, ये इनका हॉलमार्क है, इस तरह की बल्लेबाजी करना. ये स्ट्राइक रेट जो है आशीष का, ये उनका हॉलमार्क है. सोना तब कर ही खरा होता है. इसी भट्टी से पक कर निकला है आशीष, और इस टूर्नामेंट के दरमियान काफी दर्जेदार बल्लेबाजी की है. अपनी प्रतिभा दर्शाई, अपने कौशल्य का एक बहुत ही शानदार परिचय दिया है आशीष ने. देखने लायक बल्लेबाजी की है, चारों तरफ रनों को सजाते हुए. मंत्रमुग्ध किया हुआ है सभी को इस वक्त.
केवल हेमंत ने ही अपील की और फिर तुरंत ही अपनी अपील को रोका भी, अपील को सीधे सीधा खारिज किया था। 50 रन बन चुके, 50 अप ऑन द बोर्ड। स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर, पावर प्ले पीरियड की आखिरी ओवर, 5 गेंदानी बाकी है। केसीडी आदि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ये पावर प्ले पीरियड। Big thank you to Cello for being the title sponsor. Lakshmi Leela Group, a venture by Praveen Kothari, the associate sponsor. Down the leg side. Big thank you to Anjali Kitchenware for sponsoring overs number 7 to 20. Anjali Kitchenware ke Alpesh Bhai Shah is the player from Team Warriors. So thank you Anjali Kitchenware. Thank you Mr. Alpesh Shah. This is exactly what is expected of Manu. This is exactly what he needs to do. और इसी तरह के सुलझे हुए क्रिकेट के लिए तो इतनी महारत हासिल है मनु गौतम को। He will not do anything unwarranted. He will not go out of the book. इस तरह की स्थिति में तो he will never go out of the book, मनु गौतम। All bowled and well played. This is that battle out there, Hemant Mohite versus Ashish. Such a good contest. In the block hole, almost got his man. That was the false shot, a premeditated shot. He knows it and is cross with himself. He's bugged with himself. He needs to be. He knows that he played a false shot. Fortunately, very fortunate that he's still at the wicket. Well bowled by Mohite. That's a good delivery. Very good delivery, that one from Mohite. 53 for 1. That wobbled a little. That had some movement in it. Late movement. One ball to go in the 3rd over. He's gone for 16. He's picked up a wicket. The only wicket to fall so far. That is to the credit of Hemant. Ball is indeed wobbling. End of the KCD, Adi Builders and Developers power play period. 53 for 1. 84 गेंदों में 107 रन्स बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट केवल और केवल 7.64. That tells you the story so far. Definitely the upper hand at the moment is with Warriors. They have gathered momentum. इस वक्त ये मैच काफी हद तक टीम वॉरियर्स के पक्ष में नजर आता हुआ। हालांकि काफी क्रिकेट खेलना बाकी है, लेकिन बहुत ही मजबूत स्थिति बनाई हुई है इस वक्त टीम वॉरियर्स ने। दे आर ऑन क्रूज मोड। On the other hand, after 6 overs, Riders were 46 for 2. In comparison, 53 for 1. Wickets में भी थोड़ा सा आगे है टीम वॉरियर्स, और रनों को देखे तो भी थोड़ा सा आगे है। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। इस मैच में बने रहने के लिए लगातार विकेट्स को पिकअप करते रहना होगा टीम वॉरियर्स ने। प्रसाद करके रहा इस स्माइलिंग, बट यस एट द बैक ऑफ द माइंड कल के मैच का टेंशन भी है।
three major event coordinators, Captain Abhay Vaidya, Prasad Karkar, and Amit Mehrotra. Vijay Singh now comes into the attack. He's got that magic dust around him. He's the X Factor player. अगर इस तरह की स्थिति में से अगर इस मैच को अभी भी कोई बना सकते हैं तो वो है रवि नारायण साहू और विजय सिंह की जोड़ी. जिस तरह से बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम की नैया पार लगाई, एक सम्मानजनक लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर स्थापित किया, उसी तरह से शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को एक वापसी दिलाने की जद्दोजहद बिल्कुल करेंगे. बोल्ट पहले ही कहा था कि ही इज अ मैन विद द गोल्डन आर्म, ही इज गॉट दैट मैजिक डस्ट अराउंड हिम. देखिए कितनी बड़ी मछली जाल में फंसी है. शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज विकेट. With that wicket, at the moment, they have eliminated the biggest threat. Ashish is on his way back to the pavilion. That is indeed a big setback. 35 runs of 23 balls, 4 boundaries and 1 6. A very purposeful innings. An innings filled with a lot of intent. Strike rate of 150 plus, not bad. But he would have wanted to do more. Ideally, he would have been wanting to play those 36 balls or at least put up a half century. It's not about individual glory now. It is about taking your team to the doorstep of a victory. That is what this is all about. Ashish has really upped his reputation. This has been a fantastic tournament. In comes one more very seasoned player, Paraksha. He's a very compact player. He's got to be at his very best tonight. He's got to come up with a good knock. This is a key wicket. Maybe with that wicket, the floodgates will open. Vijay Singh, the man with the golden arm. मैंने तो पहले ही कहा कि अगर कोई इस तरह की स्थिति में मैच को अभी भी बना सकते हैं तो है विजय सिंह और रवि नारायण साहू. How they bowl in tandem, how they hunt as a pair will be very crucial. जिस भी टीम में हेमंत मोहिते, रवि साहू और विजय सिंह हो, 45 प्लस की किसी भी टीम में, वो टीम को आप कभी भी किसी भी स्थिति में लाइटली नहीं ले सकते हो. और अगर आखिरी ग्रैंड फिनाले तक ये टीम जाती है, ट्रॉफी भी उठा लेती है, तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी. द सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर टीम वॉरियर्स. दोनों इस तरह की टीम से यू कैन नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दे गो द डिस्टेंस एंड लिफ्ट द ट्रॉफी. आइदर टीम्स. तो 3 प्लेयर्स देख लिए, सीनियर प्लेयर्स हेमंत, रवि और विजय. सच अ रिच टीम. द 3 आइकॉन प्लेयर्स एक ही टीम में. To add to it, Sunil Raheja, Sachin Sharma, Sanju Gangir, सुमेश देवरा, योगेश कोटक. बहुत ही धनवान टीम, सुपर टीम. Getting the body behind the ball. Sumesh Devra is the second line of defense. Vijay Singh उस तरह के प्लेयर है कि he makes things happen. He will never wait on the back foot. He will grab the initiative. He will take the onus on himself. Gautam.
It's going to be difficult, almost impossible. That will run away into the fence. There was room on offer. He's played a little uppishly. Wide. Fortunately, that was just inside that wide line. It's a dot ball. The score remains stationary on 59. 101 to win of 79 balls. Change in pace, too full in length to be troubling Parag. 60 for 2. End of 7 overs. Manu Gautam is showing his bat, and it's been given off the bat. 62. This is match number 37. Oh, this could be dangerous. Oh my God. Sunil Raheja, maybe he had a chunk of the stumps to aim at. Everything happening out there. Maybe Sunil Raheja was not able to remove the glove off. If we had to remove the glove off, he would have been in a better position to effect that throw.
That is a part and parcel of being a professional wicket keeper. इस तरह की situation में वो glove निकालना, everything has to happen in one go. Sumesh Devra cannot get there. That is too tough for him. Too tough for him. The ball has enough wheels on it to go past the Chetak ply fence. 68 for 2. No room for error. थोड़ा सा दिशा से भटके, फलस्वरूप चौका मिला. केवल स्टीयर किया, केवल टाइम किया, केवल दिशा दी. That was to the left of Sumesh. He had no chance. That was to his right, sorry, not to his left. Anyways, Chetak ply boundary added. Oh, that is into the gap, and one more Chetak ply boundary. Important runs being added here. A slightly expensive over from Hemant Moite. 13 runs from that over from Hemant. End of his spell. 4 overs, 29 for 1. But yes, so what Hemant Moite has done in this tournament as a bowler, that has been exemplary. What he did with the bat was pretty much expected, because he's a class player. But what he did with the ball, that was extraordinary. He had a big role to play with his bowling, getting his team right up here to the number 1 position. He had a big role to play. Hemant Moite, the bowler. अब 72 गेंदों में केवल 87 रन्स बनाने हैं. द मैच इज ऑन. इनफैक्ट थोड़ा सा टीम वॉरियर्स के पक्ष में नजर आता हुआ इस मैच की स्थिति को देखे तो इक्वेशन की तरफ आप अगर एक नजर डाले तो इस वक्त ये मैच काफी हद तक टीम वॉरियर्स के पलड़े में नजर आती हुई. वापसी रचने के लिए जोड़ियों में विकेट्स को लेना होगा. कम से कम जोड़ी में तो विकेट लेनी होगी 2, तब जाके मैच में वापसी कर पाएंगे. इस वक्त तो ये अच्छा समा बंधा हुआ है टीम वॉरियर्स के लिए. ये मंच अच्छी तरह से साजा हुआ है टीम वॉरियर्स के लिए. अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है वॉरियर्स के लिए. अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है. मनु गौतम ने अब तक 11 गेंदों का सामना किया, केवल 11 गेंद अपने 12 रन्स के लिए. पराग ने केवल 8 गेंदों में 14 रन्स बनाए हैं. तो आशीष जो आउट हुए उसकी भरपाई करेंगे पराग, क्योंकि वे स्वयं एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है. और मनु गौतम की भूमिका यही है कि अपने 36 गेंद खेले और 38-40 रन्स बनाए. ये उनकी भूमिका है. स्क्रिप्ट के अनुसार वही टेम्पलेट है मनु गौतम के लिए. विकेट पे बने रहे, विकेट पे रुके रहे. सम फूड फॉर थॉट. चलिए, सुनील रहेजा ने पैड्स निकाल दिए है. हेमंत मोहिते ने फिर से एक बार वो विकेट कीपिंग पैड्स को बांधा है. रवि नारायण साहू और एक चैंपियन प्लेयर. ही इज द मैन विद द गोल्डन आर्म.
Welcome to Jugraj Mehta. The young guns of the GSC, they all are playing quality cricket all over Mumbai and outside Mumbai. So many tournaments happening. The MCC tournaments, the MCA tournaments. So they are a part and parcel of so many tournaments, the young guns of GSC. Still a couple of months to go in the season. The season will go on till the month of June. At least the start of June, the first week of June. And then the young guns looking to be professionals, they will get to the off-season training. They will go indoors, but they will be connected with the game. The focus will be on the fitness. 73 for 2. In comes RNS, Ravi Narayan Sahu. Straight away into the business area. This is what he does is, as a professional bowler. उनके बायोडेटा में यही लिखा है, to bowl in the right areas. My job is to ask questions of the batsman. Oh, what a delivery. That went the other way. Also kept a little low and it went the other way. Such a beauty of a delivery. He played for the one that was coming in, that went the other way. 73 for 2. This will be a good contest. Parag has got a good technique. He's talking to himself. Parag is trying to get his focus back. Oh, what a delivery. He's bending his back. He's looking more purposeful. He's not just coming out and releasing the ball. He's putting in the extra effort. Oh, that is so smartly played. Just look at the nudge around the corner. And that is why we always keep saying there is no room for error. Wasn't that bad a delivery? थोड़ा सा दिशा से बढ़ के और end result देखिए. Chetak play boundary. No room for error. This can be so cruel on the bowlers. It's a very cruel game on the bowlers. Everything is loaded in favor of the batters. A small ground, such a good batting wicket. Just look at the modern day bats. Even 1 inch down the leg side will be a wide run. दूसरी तरफ ये भी कहना होगा कि आउट होने के लिए केवल एक ही गेंद लगती है, चाहे बल्लेबाज कितना भी बड़ा हो. It takes just one delivery to get out, one small mistake. And the bowler will get so many chances. Even after being hit for runs, he will get 1 or 2 more chances. Manu Gautam needs to be at his workaholic best. टैलेंट तो बिल्कुल है मनु के पास और बहुत ही स्मार्ट दिमाग भी है. इज अ वेरी क्लेवर प्लेयर. लेकिन जिस शिद्दत से प्रैक्टिस करते, मेहनत मशक्कत करते, जो वर्क एथिक उनका है वो बहुत ही शानदार है. इज अ कैप्टन्स डिलाइट.
कौन सा कैप्टन नहीं चाहेगा कि मनु गौतम उनकी टीम में न हो? किसी भी टीम के लिए कम से कम थर्ड या फोर्थ चॉइस तो बिल्कुल होगा मनु गौतम, किसी भी हाल में, amongst the first top 4 players. Is looking to bowl a little fast. मंच बड़ा है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए नवीन नारायण साहू ज्यादातर गेंदों को रिलीज करते, लेकिन आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे डिलीवरी स्ट्राइड में. जहां तक किशोर पांडे का सवाल है, सुपरस्टार्स के गेंदबाज 4 नंबर पर है. किशोर पांडे 4 नंबर पर पर्पल कैप स्टैंडिंग्स पे 10 विकेट्स लिए है. शायद एक कदम पीछे गए होंगे क्योंकि आगे आ चुके हैं पराग जैन. इंडिविजुअल ग्लोरी तो अब बिजनेस एंड में किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है. कभी कभी थोड़े से स्टैटिस्टिक्स आप तभी तक ऑफर करने के लिए ठीक है, ये रिकॉर्ड्स मायने नहीं रखते इतना ज्यादा. 80 for 2 आफ्टर 9. बहुत ही शानदार करंट रन रेट है. रिक्वायर्ड रन रेट है 7.27. 66 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए और 80 रन बनाने हैं. 80 बन चुके, उतने ही और बनाने हैं. विकेटों की तलाश में विजय सिंह और रवि नारायण साहू, 2 आइकॉनिक प्लेयर्स, 2 शानदार गेंदबाज, मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स दोनों ही. Greetings to Jitu Mandot. Nicely driven. What a gorgeous shot. So committed रवि नारायण साहू. कितने इफेक्टिव आउटफील्डर है रवि, बहुत ही इफेक्टिव आउटफील्डर है. सो मेरे ख्याल से परफेक्ट वर्ड्स है टू डिस्क्राइब रवि नारायण साहू द फील्डर. अ वेरी इफेक्टिव आउटफील्डर. 82 for 2. Very business-like. Manu Gautam is going about his job. He's not looking to do anything out of the blue, anything unwarranted. He's not wanting to be glamorous. He's just being clinical and workaholic. Just doing what he does best. Treat the bowling on merit. Just hang around. Keep the strike rotating. Yes, hang around. Keep the strike rotating. Whenever an opportunity presents itself, play the big shots. ये मनु गौतम की बल्लेबाजी की स्टाइल है.
That single score on to 84. 2 गेंद आनी बाकी है. 10वें ओवर की 2 गेंद आनी बाकी. His head and shoulder fell over in the delivery stride, and that is why that ball went down the leg side. इस तरह से बैट्समैन के लिए टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है. फास्ट बॉलर के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निक. टेक्निक अच्छी नहीं होगी तो इंजरी के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. And that is why everybody is surprised on the world stage that how can Jasprit Bumrah bowl like that. ठीक ठाक अपील थी, इतनी भी ज्यादा मजबूत अपील नहीं थी. खारिज किया उस अपील को. लेग बाइस के रूप में 1 रन की बढ़त, 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 61 बॉल्स 74 टू विन. फासला कम होता हुआ. End of 10 overs, 86 for 2. Parag Shah is on to 16 of 14 balls. Manu Gautam is on to 20 of 17 balls. 60 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 74 रन्स बनाने हैं. 8 विकेट्स हाथ में है. इतनी भी बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो ही शायद उस लक्ष्य को तय कर पाएंगे. दूसरी तरफ टीम राइडर्स को इस मैच को जीतने के लिए ड्रिंक्स इंटरवल के बाद जोड़ी में विकेट्स को उठाना होगा ताकि एक वापसी हो. तो ये अब तक का मंजर है, अब तक की ये कहानी है. मिलते हैं ब्रेक के उस पार.
87 for 2. Test of character for टीम राइडर्स. अग्नि परीक्षा से गुजरती हुई बिल्कुल कयामत की शाम है अब टीम राइडर्स के लिए. This kind of fielding is not going to help the cause of Team Riders. And just look at the man there, Yogesh Kotak, one of the better outfielders. पूरी फैमिली टूट पड़ी मेरे पे. Off the outside edge. थोड़ी सी नाजुक स्थिति टीम राइडर्स की. Very clinical in their approach, Team Warriors. They are playing to a game plan. Team Riders did a fantastic job to get to 159. That was fantastic batting. A very good rear guard action. But now they needed to be at the top of their game. They got to bowl and field out of their skins to defend 159. Still in with a chance, but they got to make it fast because the time might run out. That is the only worrisome factor, that the time should not run out. Well bowled, well played, good hands, hand-eye coordination. $91 for 2. Ravi Sahu is into his second over. Manu Gautam has faced 21 balls for his 24. Oh, what a catch! He picks up a blinder. That is pure magic. That is the Kodak moment. Pure magic, pure magic. Vijay Singh picks up a stunning catch. Shakti Plastic Industries wicket. They will be more than happy to see the back of Parag Shah. He was looking so focused. The best thing about the stay of Parag Shah at the wicket was he was looking focused. He was playing for the team. Anand Sangai, one more champion player, comes to the wicket. End of 11 overs, 92 for 3. They needed this wicket desperately, Riders. They get it. And what a catch. That goes to the credit of Ravinara Sau. But what about that leaping and stunning catch by Vijay Singh? आशा की किरण फिर से एक बार जागरूक होती हुई टीम राइडर्स के खेमे में. A few cheerful faces. There is nothing that Vijay Singh cannot do on the field. Yes, the team is getting into a huddle. एक दूसरे को पंप अप करती हुई टीम राइडर्स कि चलिए लगे रहो, डटे रहो, अभी भी कुछ भी हो सकता है. Just hang on. Just play your best cricket. Tighten up your game. That should be the match template. That should be the Mool Mantra.
make life miserable for Team Warriors. Make them work hard. Just keep trying. Just keep trying and let's see what happens. त्रिवेदी भी थोड़े से टेंशन में है. आनंद संगाई, इतना बड़ा नाम, is at the number 3 position on the orange cap standings after Aslam Bhai and Sri Gopal Jaju. सांगाई के लिए स्क्रिप्ट यही है कि जब वो विनिंग रन जब बने तभी विकेट पे बने रहना है आनंद सांगाई को. ये उनका मैच टेम्पलेट है. Stay at the wicket till the very end. कल श्री गोपाल जाजू ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बताया कि ओपन टूर्नामेंट से भी ज़्यादा टफ है 45 प्लस. उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था. 8 मैचेस खेलने के बाद ये अंदाज़ा लगा उन्हें कि 45 प्लस बहुत ही टफ गेम है क्योंकि कितना अनुभव है. ऑल प्लेयर्स आर सो क्लेवर. Well bowled, well played. He's a very seasoned player. जद्दोजहद करती हुई टीम राइडर्स Oh, he lost his footing. This could be dangerous. Is he gone? We'll have to wait and watch. That's been referred. This will be interesting watching, but they're not celebrating. They are not celebrating. So let's see. Maybe touch and go, or maybe he's safely back home. Kiran Purandare. Not out. The throw was a little towards the left side, so the wicketkeeper had to fetch the ball from his left and get the ball into the stumps. That took a while, and that was enough time for Sangai to make his home, to make his ground.
Greetings to Rakesh Suvarna. What a delivery by Vijay to beat somebody else's season and as accomplished like Sangai. That really takes a good effort. 95 for 3 after 12. तो अब आलम यह है कि 48 गेंदों में 65 रन बनाने रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ 8 के ऊपर 8.12. 48 balls, 65 runs to win the match. Ravi Sahu has bowled 2 overs, has given away 13 runs and has picked up a wicket. Twenty-three balls, 23. That's a japper. What a delivery. They'll need quite a few of those.
The bad timing, in fact, saves the day for Manu Gautam. If it would have been well timed, maybe it would have been straight to Yogesh. (46-64). परफेक्ट, गुड फील्ड सेट. देखिए, जब सिंगल सेविंग पोजीशन में अगर फील्डर को तैनात करना है तो वाकई में उस सिंगल को रोकने के लिए खड़ा करना है वहां पर. इनसाइड द सर्कल जब आप खड़े होते हो इस तरह की स्थिति में, योर जॉब इज टू स्टॉप द सिंगल, स्पेशली टू अ मैन हु इज न्यू टू द विकेट. Oh, that went the other way. He's got this uncanny knack of taking the ball the other way. आनंद संगाई जैसे बल्लेबाज को इस तरह से बीट करना, चारों खाने चित करना, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल अपनी रंगत में है रवि नारायण साहू. It's a peach of a delivery. That is such a good job done. If it would have been a boundary, all the good work of Ravi Narayan Sahu in this over would have been undone. So yes, good save. Only 2 runs given away. That is a big relief for Ravi and the team riders. 98 for 3, 43 balls, 62 to win. Required run rate 8.65. Hanging on, it's going to be a tough needle to thread, but still holding on to that element of self-belief. Playing a very tight game. A change in pace, drifting down the leg side. That's a wide. The thought was good, the intent was good. Trying everything that he's capable of. Testing times for Sangai. Yes, he's weathering the storm. 100 runs up on the board for Team Warriors. 42 balls and 60 runs to win the match. 7 ओवर्स में 60 रन्स बनाने हैं. विजय सिंह और रवि साहू के स्पेल में, दोनों को इस स्पेल में 1-1 ओवर आनी बाकी है. तो किस वक्त पर वो 2 ओवर्स करने हैं, वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, बहुत ही क्रूशियल है. थोड़ा सा संघर्ष किया है रवि और विजय को राइट वॉरियर्स ने, लेकिन दे हैव नॉट गिवन अवे द विकेट्स. आशीष पटनी थोड़े से इंजर्ड है एंड इज गेटिंग सम ट्रीटमेंट. आइडियली ही वुड नॉट वांट टू गो टू बैट, बट इफ द सिचुएशन अराइजेस ही विल नॉट थिंक ट्वाइस टू पुट द ग्लव्स ऑन एंड द पैड्स ऑन. सबसे क्रूशियल मैच है, किसी भी हाल में इस मैच को जीतना है दोनों ही टीम्स के लिए. आज की शाम जो भी इस मैच को जीतेगी सीधा ग्रैंड फिनाले में जा पहुंचती है. क्वालिफायर नंबर 2 का टेंशन पालना ही नहीं है. कश्मकश विजय सिंह के लिए यह है कि कभी गेंदबाजी में उतरे, कब वो आखिरी ओवर करे,
खुद की भी एक ओवर बाकी है और रवि की भी एक ओवर बाकी है. कब वो 2 ओवर्स करे ये कश्मकश है. That is why he's into 6s and 7s. Yes, we need to keep an eye on the clock. Yes, sir. अंपायर का इशारा है कि घड़ी की तरफ ध्यान फरमाए टीम राइडर्स. एंड Sachin to Anand. What timing! Gandhar Oil Refinery, Jensen LED Light 6. What a shot! Terrific hitting. Humongous shot. That goes out of the park. Just look at that for pure timing. One of the most fiercest shot of the evening. Lusty hitting. Once again, the same result. 2 consecutive Gandhar Oil Refinery and the Jensen LED Light Sixers stepping up on the pedal. Just look at Nitin Singhal. नितिन सिंघल की बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर देती है. He's broken the shackles. He was looking for this kind of an over. See, he weathered the storm. रवि नारायण साहू और विजय सिंह की ओवर्स को खबरदारी से खेला. जैसे ही उन्होंने अपने स्पेल को रोका, सचिन शर्मा थोड़ी सी वीक लिंक शायद आनंद जैसे बल्लेबाज के लिए, तो इस ओवर का फायदा उठाने की जद्दोजहद में he's given away 28 runs of the 8 balls that is bowled. Short ball. Oh, they get him. They get the big man. Just look at Mohite, Sunil Raheja. Everybody's pumped up. वो एक आखिरी उम्मीद की किरण फिर से एक बार निर्मित होती हुए. विजय सिंह तो उस कैच को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाले थे. Hung on to that ball with dear life. Shakti Plastic Industries wicket. Anand on his way back. This time a miscued shot. He gets that big wicket. Sachin at last. That will be a big sigh of relief. राहत की सांस ली है सचिन शर्मा ने. लेकिन क्या आनंद संगाई ने अपना काम कर दिखाया है? Only time will tell. The new man in, सुनील देवली. रोमांच बरकरार है अभी भी दोस्तों, कहीं पर भी मत जाइएगा. अनिश्चितताओं का खेल है. मनु गौतम ने 25 से गेंदों का सामना किया है. 25.
मनु गौतम ने 25 गेंद खेली है और जियान ने कम से कम 60 गेंद। ये जो कंबाइंड एक्सपीरियंस है मनु गौतम और सुनील देवली का, इस कॉम्बिनेशन ने करिश्मा कर गुजरना होगा। आशा की किरण फिर से एक बार जीवित होती हुई टीम राइडर्स के लिए। There will be a spring in the stride looking at the back of Anand. Sachin to Sunil Devli. Thirty-eight balls, 48 to win. That was begging to be hit away. That was a rank bad ball, and that is put away for a smart Chetak play boundary. Easy pickings. Oh, what a stop! What an effort! क्या बात है? अच्छी टाइमिंग थी, स्पॉट भी अच्छी तरह से पिकअप किया था, गैप में खेला था, लेकिन बहुत ही दर्जेदार फील्डिंग, अ डाइविंग स्टॉप, सच ग्रेट कमिटमेंट, स्टिल हैंगिंग ऑन. 36 balls, 43 to win. The next 2 overs really hold the key. When will Jagdish Bisawa, the bowling super sub, comes in to bowl at a very crucial time? Hello, testing, mic testing. Hello, check. Hello, check. Two of the best teams up against each other in this qualifier number 1. It's going to be Jagdish Bisawa. The bowling super sub now being brought into the attack from the Sailor Pavilion end. It's been very good this season. Jagdish, this is a pressure situation. The pressure is on both the teams. It's not only on team riders. It might be a little more on riders, but the pressure is on warriors as well. This is his favorite shot. The favorite shot of his fetches him a Chetak play boundary.
Chetak Ply boundary takes the score to 121 now. 34 balls and only 39 runs to win the match. They have to find a very early remedy here. Otherwise, the time will run out for team riders. They need to find a remedy. It's a no ball, wasteful toss. Chetak Ply boundary, consecutive boundaries. Because it's a no ball, it's now going to be a free hit as well. Bonus time for Sunil Devli. चौतीस में 34 चाहिए. 34 गेंदों में 34 रन. आप स्वयं ही अंदाजा लगाइए कि ये मैच किस दिशा में जाता हुआ. Chetak Ply boundary. Runs coming in thick and fast. रनों की बौछार होती हुई चौके और छक्के के माध्यम से रनों का सैलाब बहता हुआ टीम वॉरियर्स के लिए. 3 consecutive boundaries. Hat-trick of Chetak Ply boundaries. 130. 33 balls, 30 to win. That tells you the story so far. They've got 6 wickets in hand and they possess a very strong batting lineup. थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हुआ कि पहले ही मन बनाया था कि थोड़ा सा मैं डिफेंसिव खेलूंगा. काफी अच्छे नजर आए हैं सुनील देवली गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग करते हुए, बल्लेबाजी भी अभी तक बिल्कुल सही रवैया दर्शाते हुए. इट्स बीन अ गुड इवनिंग फॉर Sunil, but the job is not done yet. He knows that. Pesh Thakkar. Pressure is on Jagdish. Is coming to bowl at a very crucial time. The ball is not coming out of his hands perfectly. Dipesh Mehta, backward of square leg. The biggest clap for that fielding from Dipesh Mehta was from Bhavtisha Dipesh Mehta. 30 balls, 27 runs to win the match. Shouldn't be too much of an ask, but you never know. It's a game of cricket. We've seen funnier things happen. At this very ground, हमने कितने स्ट्रेंज रिजल्ट्स देखे हैं. फिलहाल तो मैच बिल्कुल अपने ताबे में लिया है. फिर भी पता नहीं, क्योंकि जब तक वो आखिरी विनिंग रन न बनाओ या तो वो आखिरी विकेट न लो, तभी तक नतीजा सुनिश्चित नहीं होता है. लास्ट 2 ओवर्स में 33 रन से दिए टीम राइडर्स ने, और वहीं पर वो मैच का पासा हमेशा के लिए पलट चुका है. क्वालिफायर नंबर 1 खेलने का फायदा यह है कि अगर मैच हारते, क्योंकि एक टीम को तो हारना ही है और एक मौका मिलेगा
So it's still not a lost cause for whichever team that loses the match, और एक मौका मिलेगा. लेकिन जैसे कि पहले हमने बताया था कि you do not want to depend on qualifier number 2. लेकिन हारने के बाद तो वो क्वालिफायर नंबर 2 तो एक ब्लेसिंग है, एक इंश्योरेंस है. यही फायदा होता है. दिस इज द पर्क ऑफ ending up in the number 1 and the number 2 positions on the points table after the round robin league format. This is the beauty of it. कल एलिमिनेटर होगा टीम चार्जर्स बनाम टीम सुपरस्टार्स. जो भी वो मैच हारेगी टूर्नामेंट से बाहर, all the good work will go undone tomorrow for whichever team that loses the match. The team that wins the match tomorrow will play against the losing team of this match. यही हमारा आईपीएल का फॉर्मेट है और पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में अब इसी तरह का फॉर्मेट अपनाया जाता है. 85 to 90% of the tournaments, league formats are played on these grounds. The playoffs, वो सेमीफाइनल वाला वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है वो फॉर्मेट. क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल. अब समय है प्लेऑफ्स का. पर भी तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा. और भी ज्यादा टफ होने वाले आईसीसी रूल्स वर्ल्ड कप से बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे टाइमिंग को लेकर. शुभमन गिल ने 12 लाख रुपए की पेनल्टी दी थी पहले मैच में कप्तानी करते हुए. थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया था. 12 लाख रुपए उनकी मैच फीस में से कटे थे. 12 lakh rupees was the penalty. मे बी वो उस किस्म का अमाउंट तो उनके लिए पीनट्स है. टाइमिंग को लेकर अब सिनारियो चेंज होने वाला है वर्ल्ड क्रिकेट में. वहां पर होगा तो जीएससी में भी होगा. Sunil Devli facing Vijay Singh. Vijay Singh comes in for his final burst. और शायद इसके बाद का ओवर रवि नारायण साहू का होगा. They got enough fuel left in the reserve tank, Team Riders? That is the question. Played a good game, but Team Warriors so far have been a little better. +1. $29 balls, 23 to win. Definitely Team Warriors has put Team Riders to the sword. बिल्कुल तलवार की धार पर रखा हुआ है. से कहते हैं तलवार की नोक पर टीम को रखना. काफी पेशेंस रखा है विजय सिंह ने आज की शाम. 28 गेंदों में केवल 20 रनों की जरूरत है.
Sunil Devli is on to 20 of only 9 balls. Come at the hour, come at the man. What a delivery from Vijay Singh. What a beauty. और देखिए मनु गौतम वो सपोर्टिंग एक्टर है, लेकिन कितना इफेक्टिव है. 31 रन्स बनाए 27 गेंदों में. इज हेल्ड 4 to 1 एंड. सपोर्टिंग एक्टर की भी एक अहम भूमिका होती है. और मनु गौतम हमेशा हर किसी मैच में सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका में काफी खुश है. हम कंफर्म करेंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर. राजू पवार सर का इशारा है, शॉट है कि नहीं चेक करना है. Manu Gautam is not even trying to be a hero. He is happy doing the role of the supporting actor. Till the time his team wins the match, he is not bothered. All okay. That's a legal run. So couple added. Jonty, 1 or 2? 2 runs. Just a little part of the wood was inside. Just a little. It cannot be on the line. Agar on the line hota to short run hota. You got to have a little part of the bat inside the line. थोड़ा सा मैग्नीफाई किया हेमंत भाई हमने मोहिते, and that was a little inside. Just we magnified it. This has been a good game of cricket. 25 में 17, 25 गेंदों में 17 रनों की दरकार. "27 balls is what Manu has faced. चार ओवर 25 रन 1 विकेट. विजय सिंह का ये स्पेल. चौबीस में 17 चाहिए. मामला अब पेचीदा होता हुआ टीम राइडर्स के लिए, उलझता हुआ. आपातकालीन स्थिति में है टीम राइडर्स इस वक्त. Will they be able to do some disaster management? Wait and watch.
This kind of singles to very good deliveries will kind of frustrate the bowler and team riders. 144 for 4. 22 में 16. 22 balls, 16 to win. 6 wickets in hand. Manu Gautam on strike. He's faced 28 balls. 8 गेंद अभी भी बाकी है. गति में परिवर्तन किया रवि साहू ने. They've tried everything at their disposal. But yes, both Manu Gautam and Sunil Devli have shut the doors on a comeback for team riders. They have played tight cricket. They have tightened up their game. कितनी अच्छी डिलीवरी, कितनी शानदार गेंदबाजी, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगती हुई. गेम प्लान यही था टीम राइडर्स का कि रवि साहू और विजय सिंह की ओवर्स को सेफली नेगेट करे, भले रन्स ना आए. उन्नीस 15. कोशिश काफी अच्छी की, केवल 2 ही रन आए. इनका भी स्पेल यहीं पर समाप्त होता है. 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल तो कर चुके हैं. चार ओवर्स 20 रन. ये रवि नारायण साहू का स्पेल है. 1 विकेट उनके खाते में. 18 में 15 रनों की जरूरत है. एक आखिरी गैम्बल करेंगे. दीपेश ठक्कर को उतारा है. एक आखिरी कोशिश. मनु गौतम की बल्लेबाजी की भी बहुत तारीफ करनी होगी. वॉरियर्स के किले को बिल्कुल सुरक्षित रखने में एक अहम भूमिका निभाई है मनु गौतम ने. Oh, well driven, and that goes to the gateway. That Chetak play boundary will settle the issue once and for all. That will have to be the final nail in the coffin. 17 में केवल 11 चाहिए. अब 6 विकेट्स हाथ में है. मनु ने 30 गेंदों का सामना किया है. 36 रन बनाए हैं. Maybe we are now getting into the formalities. Not yet. $150 up on the board. 151.
तरफ हर्ष उल्लास होगा, दूसरी तरफ हताशा, मायूसी. Blissful euphoria in one camp, utter dismay in the other. Nikla. Chetak play boundary. Is on to 42 of 32 balls. Only 5 more to win now. Who will hit the winning shot? Sunil or Manu? Doesn't matter who hits it. The scores are level, ladies and gentlemen, boys and girls. The scores are level. The ball has not reached the boundary. Only 1 run added. 4 to win. A boundary away from a victory. Sunil Devli on strike. Sunil has faced 17 balls for his 24. Flashing innings from Sunil Devli. Flashing innings. Just what the doctor ordered. Manu की तरफ से बिल्कुल workaholic innings. Sunil Devli की तरफ से flashing innings. एक बल्लेबाज को एक एंड पकड़ के रखना था, यही भूमिका दी थी मनु को, और दूसरी तरफ एक बल्लेबाज ने अपनी नेचुरल गेम को खेलना था और वो भूमिका अदा की सुनील देवली ने. 157, 3 रनों की जरूरत है. 14 गेंदों में 3 रनों की दरकार. जैसे ये मैच खत्म होगा, आई विल रिक्वेस्ट वन एंड ऑल टू प्लीज गेट टू द स्टेज for the prize distribution function of match number 37. It's all over. What that boundary, they wind up this match. Qualifier number 1, Team Warriors makes it to the grand finale of the Cello 45 plus T20 League. Congratulations, Mr. Nitin Singhal. Congratulations, Mr. Lalit Vij. राजेश पटनी एज वेल. दैट इज सच अ हैप्पी यूनिट. खुशी की लहर इस वक्त नजर आती हुई टीम वॉरियर्स के खेमे में, और क्यों नहीं, 1.5-2 महीनों की मेहनत रंग लाती हुई इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच बिल्कुल खेलेगी टीम वॉरियर्स. हार्ड लक टीम राइडर्स, यू हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, और एक मौका मिलेगा टीम राइडर्स को, तो इट इज नॉट अ लॉस्ट कॉज येट. Yes, requesting the GC member, Mr. Vivek Nasaria, Mr. Prasad Karkera, Captain Abhay Vaidya, the co-owner of Team Warriors, Mr. Nitin Singhal, to be a part of the presentation party.
यतीश requesting both the teams to please come in front. Team Warriors, Rajesh bhai, Rajesh Patni, jaldi आओ. Good evening and a warm welcome to the post-match presentation. Match number 37 comes to an end. The first match of the business end, the first match of the playoffs. Qualifier number 1 comes to an end. Both the teams played some splendid cricket. Nothing much to choose between the two teams. But in the end, Team Warriors dish out a 24-carat gold batting performance to make it to the grand finale. A big round of applause for Team Warriors for becoming the first team to make it to the grand finale of the Selo 45 Plus T20 League. May I request Mr. Vijay Singh to please come up and have a word or two with us. Let us all give it up for Vijay Singh. For the presentation party, we've got a GC member and the Hill Club chairman, Vivek Bhai Nasaria, Nitin Bhai Singhal, Prasad Bhai Karkera, Captain Abhay Vaidya. Hard luck, Vijay Singh. Two of the best teams. Nothing much to choose between the two teams on paper. You all played fantastic cricket to get to 160, but the other team was too good, very clinical, and they got about their target so easily. Very professionally, they chased down the total. क्या कहेंगे? कहने के लिए उन्होंने आज उनका दिन था, अच्छा खेले. आशीष ने मैच को हमसे दूर ले गया एंड रेस्ट मन्नू एंड देवली दे प्लेड वेल, तो उनको जीतना ही था. आपके लिए ये अगला मैचअप क्वालिफायर नंबर 2 लिटरली सेमीफाइनल बन जाता है. That is the perk of coming into that number 1 and number 2 positions. You get one extra shot. ये बड़ी, it's a big relief. You get one more chance, isn't it? Obviously, we are the table topper, so we have one more chance. Yes, wishing Team Riders the very best for the second qualifier. I'm sure that you guys will really make a comeback and look to be winning that game. Congratulations, well done, hard luck. Yes, that was a terrific catch. Vijay Singh, he picked up a blinder. The very happy man is already coming up on stage. Rajesh Patni के लिए जोरदार तालियां. राजेश, ये वाकई में आपके लिए एक मुबारक लम्हा है. जो मेहनत मशक्कत की 2 महीनों से अब रंग लाई है. सेलो 45 प्लस T20 के टाइटल मैच को खेलने के लिए आप पहली टीम बने हो, क्वालिफाई कर चुके. ये बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है. फाइनल में रिजल्ट कुछ भी हो, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है. बहुत ही शानदार क्रिकेट खेला. टेबल टॉपर्स राइडर्स, बहुत ही जबरदस्त लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर स्थापित किया. जिस तरह से आपने वो क्लिनिकली चेस डाउन किया, वाकई में दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट चेजेस ऑफ द टूर्नामेंट. क्लिनिकली तो किया, लेकिन प्रेशर बहुत था. सबको मालूम है, आप जितना इजीली बोलते हैं ऐसा नहीं था. राइडर्स बहुत स्ट्रांग टीम है, और रवि साहू और विजय सिंह का इतना अच्छा इनिंग्स, और आज जो भी कर रहा था उसने जो एक चेंज किया था, हम लोग वहाँ पे भी बैठे थे, वहाँ से वो एक बॉल पहले उधर गया और उसने पराग का कैच पकड़ा था, और कैचिंग उसने एक भी ड्रॉप नहीं किया. सुपर ओवरऑल प्लेड बाय राइडर्स. और हम लोग के साइड से आशीष जो फॉर्म में है, सबसे बेस्ट खेल रहा है. कीप इट अप. मनु गौतम ने बहुत अच्छा टेम्परामेंट दिखाया. आनंद कैमियो खेला, और सबसे आज का हीरो मेरे तरफ से तो सुनील देवली है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा बॉलिंग डाला और सुपर बैटिंग किया. पराग, वेल प्लेड वॉरियर्स. यस, दो चीज बिल्कुल परफेक्ट कही आपने. सुनील देवली वॉज डेफिनेटली दैट की मैन. मैच टेम्परामेंट मनु गौतम ने जो दर्शाया परफेक्ट था. अपने अच्छे फॉर्म को आशीष ने बरकरार रखा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण था. अब समय हो चुका है कि हम मैन ऑफ द मैच का खिताब दे. मैन ऑफ द मैच का खिताब देने के लिए हमारे जीसी मेंबर हेल्थ क्लब के चेयरमैन विवेक नसरिया, जो आज पूरी रात सोएंगे नहीं कल के मैच के टेंशन में. सवाल ये, दोनों ही कोनर्स, आज की रात तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण मैच है एलिमिनेटर. इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच कल वाला है.
चले, मैन ऑफ द मैच मनु गौतम, 33 balls, 43 not out, and 2 wickets also. 2 wickets also. "43 not out, 4 overs, 19 runs, 2 wickets." मनु गौतम ने 32-33 गेम खेली, जियान ने कम से कम 60-70 गेंद खेली. किसी ने किसी को पकड़ लेता है जियान गेंदबाजी कराने के लिए. He gets hold of somebody. Very well played, Manu Gautam. You never tried to be a hero. You are one of the best supporting actors, और you are happy till the time your team is winning. बहुत ही जबरदस्त भूमिका perfectly आपने निभाई. Superb bowling, superb batting. You held fort at one end. You shut the doors on team riders. Thank you, sir. That was my role. And last couple of matches I couldn't do it properly. This time I was very sure कि मुझे कुछ गलत नहीं करना. कुछ हो जाए, अच्छी बॉल ले जाए मेरे विकेट तो कोई बात नहीं. But I'll not do it. So last time I thanked my owners, my captain, my coaches. This time it's an entire team effort. Today it's not me the man of the match. This time, like the way Parag played, then Anand played, Sunil bhai played, मेरे ऊपर pressure ही नहीं था कि मुझे run मारने, ऐसा कोई pressure नहीं था. I just had to be there and score my singles, doubles. Even bowling में सबने wickets लिया. Good catching. मैंने drop किया एक catch. Sorry. But good team effort. Lastly, I want to thank my mom and dad. Mom is here today. Last time भी वो आई थी तो man of the match था, incidentally. मेरे dad is not well तो वो घर पे match देख रहे हैं, I'm sure. Thank you, thank you. So मम्मी बचपन में कहती थी पढ़ लो, अब कहती है बेटा जीत के आना, तो अच्छा लगता है सुन के. He's so good with his words, isn't he, Manu Gautam? Well done. Congratulations. With this, we come to an end of this wonderful evening. Kal Eliminator ko. You cannot afford to miss the Eliminator. Tomorrow, Team Charges and Team Superstar, 6:30 p.m. toss time. You got to be ready to play out your best game. Good night. God bless. Take care. Milte kal. Thank you. Thank you, Captain Abhay Vaidya. Thank you, Prasad Karkera. Congratulations, Nitin.